Ileng du nang ti hla thiam tak meiron sa tu kha zomuan pui ania kan hladut le atan chuan David lal zum lian a zai kan ngai thlaveli angani hian pulel rim ruata phua a thlon meimo ti hla ron sa don ani ilo ngai thla ang a thlon meimo David lal zum liana Itan rin takin kalau ngakci masih kering phaglau rengin gang vang ko pui lamang ilo let leni katan trana min khen tu mai alo ni si katwara fan pui lo chim war zo hiam ka in me mo itan ka rin nom na athon mai
athon mei mo ti hlarun satu kha David lal zum liana ani kan ngai thak chun zum sian anga tuna chuan zorin zuali khiang te in ka ngai dam che ti hla asak kha kan ngai thavele anga he hla hi music lama po mi bon em mei lalke sai lo phwa ani a ala thule athluk tin music engkim mei hi amoi em ani lo ngai tha ang ka ngai dam che zorin zuali khiang te Samang chen ni silo she thiam zung har nge han don sia la I thil ti zong zong te nang ma wang ni I shere go with him long nge cha ti tam tu ni ma se katani lu bersi kangai dam se se rilu na ma se shia dre sa to long se si mi thana sam ring chin si sat me le an ka nui boy lo ki le ro lung her me lo fe kalo pom se du lai lo ki le ro lung her mai lo ve kalo pom se du lai ka kan kar bia thu ni ma se atop na ero ni lo e du vare ngani karin hello lung mo lo vang ni tham ren song ko palo nang de kan na ru so nang de sai ka re thei lo kan ngai dum se se rin ru na ma se shia re sa to long se si mi thana sam ring chin si sa me le an ka nui boy lo ki le ro lung her mai lo fi lo mong se du lai lo ki le ro lung her mai lo fi lo mong se du lai nang nen kan lim na rung so tham ra lan kapal lung mo luat vanga iti suan ni ma se oh kangai dam che iti suan ni ma se oh kangai dam che kangai dam che oh kangai dam che kangai dam che asin bil ru na ma se shia rain sa to long se si mi thana sam ring chin si sa me le an ka ni boy lo ki le ho lo lo fi lo pom se du lai lo ki le ho lo mai lo fi lo pom se du lai kangai dam che ti hlarun satu kha zorin zuali khiang te ani ole tuna chuan ro pui pachuaw zai kan ngai thavele anga ani hian ka shai du lai te ti hlarun sadon ani kalung lo na le du ai sa mi nu thai ka chang ve
hin lai na tua ra har nghe zua del lâu tu niang ma ten ka shai buông con tuai ka ra tha mang ka lâu ra le ngừng khua har chuang a le lai lung lai lu mo zo we tim thi yang a dan zo ruan lo i shai chen ni he chua ke Tôi lúc say ngã ya chu ni mang ni giang khua say chi nhẹ cặp ma ngày na lần tir về turi kan kar dang ta si irle thei ya môi xì lồng chuông kim lên turi chun trôi lâu nào ang lên tur chuan ô cặp hal thei môi xì lồng có say đón tuổi cả tu lại te u hey hi lâu ngai te u cùng vui tâm po lia min ve ma se yêu thế rang in môi lâu zua pa nu thain chan khengi min han shreng u la thai kim lâu chu mà ngày na hi ô nghìn lu lâu ang che in ma ngày na ô cam môi ta te hin lai thar le chi in kim tlang môi le phei lai khai sia mit kha cham re nge ton mang lama lim ten le ni nawang kan nui za ma se jin chia bo ar zai lo sa hayam chang le si chi qua bel tan chua en ka ni nem le lung chon lu mai ka ni ma se mi xua ngai dang chin tu chua ka bana min ka ye ma ngai tlag lo ma ngai tu min e hin lung tham wan na ne ka sual te min ngai dang tu chua min en san ngai lo ve ka
kan ngai thak ta kha ka shai du lai te ti hla ani a aron satu khala ro pui pachuawani kan hladot le atan chuan tbc zai than puyan ruihlo zun zam ti hla sakha kan ngai thavele anga hela hi pilal sang zwali sai lo phu ania tun lai kan ram din mun nen hian hela hi in me le ni shiata ruihlo in chalai du om tak tak tele chung ko lim tak turte an limna ati chia a kan ram ati chena sa em boka apoi tak zetani ngai thatu zong te po thei top chhuat tlangila ruihlo dawna konga mala zel tur po in kanin somin kanin ngen tak mewani olei lo ngai thang ruihlo zun zam tbc zai than puya Siat lo kha kan ram tlang dum tua a fan so da suana ti fo in ro thar don tuai te a chim pin me ke arab tha ke mang lai par bo Roll thar vula ye chua lo sun sa min apuat ta sakwa na lai tha reng sam si lo cham tu ang lai ta ang riang ruai dai fe lam pui tuang sa va thi lâu ngai re in an ya e asu asei e khawang a fua ne so ram par mo te atliak me ke mang lai par mo Roll thar vula ye chua lu sun sa min apuar ta sak ruang alai tha reng sam si lo cham tu an lai ta an riang ruai lum pu chu lang Pham ru lum wa la an liam se le lu a hai ye la ya na lua chun le swa kan tra apoi nge ye wang lai par bo ye tia ro sun sa min apuar ta sak ruang alai tha reng sam si lo chan tu an ngai ta an riang wai a shi a se ti bel hem so Rao khale sing a pham ra Goi tin suan lo pa a sum tin do tu Quan an ngit no man a so mi len Wang lai par bo ya tia Roll thar sun sa min apuat ta sak ruang alai tha reng sa
chẳng tư an ngại ta an riêng loài chẳng tư an ngại ta an riêng loài Rui hlo zun zam ti hla thiam tak mai ron satu kha TBC zai than puyani kan hlan hnung beratan chuan lorin digi khiang te in lungrun kadim lo che ti hla sak kha helo ngai thlang u lungrun kadim lo che kadim mo lo che ring len lo mangai bia thu min hlan hi ma se Trong bia lung ru cùng qua đi cao bia bia thu mình lần lại khao rai ra kariana qua đi xây tu răng garing malong yang thu tam la lang Xin chàng tuần mơ dấu mơ Cả tra bia bia thu min lan lạc lệ Lên qua thế lung lại cái tốt dấu lâu lần thế Anh là em cho tâm lý ôm lòng mơ Trong tháng loạn lâu đi nghe Chung qua lâu đi Thu lâu đêm Gặp tông em như gió Đủ lại ra thiam ở phá Hân hân em về lệ lungrun kadim lo che ti hla thiam tak mai ron satu kha lorin digi khiang te ani ole chuti song chu tun chum thalai te huang kalung dum huna leng zem le leng long hla moi tak tak kan ngai thla khau thei te chu lo ni le ta a ladin pui kani a Akashvani Aizawl atanga puan chwa ani Hei hi Akashvani Aizawl ani tuna tanga hun rei lote dar sari le mini somthum panga atanga dare le chan vein kara hian cyber crime chungchanga live program bose ani dona pu zonun sanga additional SP CID crime le pu MS dongliana inspector cyber crime police station Aizawl miten hun anron mangang hemi hun chung hianin mobile number 9436390706 a SMS in abiak po thayang ngay thla tu te chi bai vek ule oliflel exam mi kani a kan ngai thak tak ang khan zan in kan live discussion huna chuan tun laia kan mamu em mai cyber crime chungchang ron soya kan zo na te min chan sak turin cyber crime police station Aizawl atangin puzonun sanga additional SP CID crime le pu MS dongliana inspector te hian hun miron man pui do na ngai thatu ten hemi hun chung hianin cyber crime chungchanga shat du te zo du kan nei te kha telephone mangin SMS mangin azot hei do na phone number te po khan ron soi to ke ni pon kan ron soi non vele anga kan hun te min lo man puya shat du le zo du in nei te ron zo turin kan som cheu ani phone SMS a phone zo thei na phone number kha 9436390706 le 9612500830 kami phone number pahnia te khan SMS mangin zo na azo theini chibai ule hey cyber crime chungchang kan han ti a i aming
achang hianin lo om deuh nga kha ni samaya crime ti te kha han tela I puzo nun sang a hianin I han soifia deuh phot sela tiro a hon nan cyber crime chung chang han ti hian engemaw a huam chin te a tul kan sha tur chula angai chin te kha han soi masa se thang a le hello ma ni cyber crime nga ti hian azau du kop me omzia ol samdeu han le chuan computer le internet kal tanga dan bo chet na ti hian ale thei menga computer kan ti khan khami computer desktop chu hingai to lo taila hatiang computer ang chi mobile phone te laptop te le khatiang sang device sang tablet ang chi te po keng te la chuanin khatiang mang le internet ma kan ti kha chuan atop na tak he siam har ve angrang acha chu tuna chon kan thringa engkim hi internet kal tlang ten sum don te le engkim in biak po na te hi ni to chu wang chuanin tun lai khovela takhi jot engkim mai hi cyber crime ang do point rin lu theina chen hi oma chuti rual chuanin khami athil ti theina computer le technology athil ti theina mang big dewa dan bo china soinan hian kan mang big deuh berani cyber crime kan ti hian ti chuanin ms dong liana kan hian kan zo tanga hi tun lai khovel te po atizim to a hemi tunan soi ang kan technology lama te internet kal tlang ten kan in thlunzom na sem to a I heta US a demo an buaina ang chi kha mi Aizawl tuna Mizorama po kan buaina alo ni ve alo thleng phak ve zel to a tun lai bi khian han ti ta ilangin I Mizorama hianin enge hetia ang kan crime a hian enge han lang sar deuh te mo a omem ti kha kalome nia I tuna iron soi ta kong khan I tunla chung global wall kan tia khovel pui internet khovel kan in thunzom vek to a Mizoram bi khovela cyber crime luar zual kan di Mizoram athleng ve vek thowa USA mo England mo khan athleng ka turu big tina ni chonglo chuan Mizoram po chungang tho chuan mundang an tiang tho chuan financial fraud kan tia masabera chun Mizoram athleng tamber I kan case rate po a percentage ang zong pa na sang ber ti mai lamo sumle paya in boom na kan tiang hitam emema chuan apani na le chuan sexual harassment online harassment te po ani kop thei thawang chu a sexually de kherlo de po ange I online na mi wati mol phawang chi te mo ka tiang chi te chuan mi ni na ruk sak kan tiang chi identity theft kan ti le a he tanga chuan hei mi thalak emo mi photograph emo manga DP emo engmo account lo siama khatiang manga mi ni na lak sak manga til lo ti kwalang chi kha omle thei bokonga tin tun haya til thar deulek kanan tona chuan sextortion kan ti meya sex video mo engmo thalak tlema mi mo kan du lo minan lo nei manga in blackmail na ang chi mo sumron in thin na financial crime noya kana lut thei tho rolina crime head dang kanan pede boka chuan chumilo jan false rumor te kanan tile boka hi thu diklo the dar mi zo phei chu hi social media thu kan mu masak ka adiklo po kan siat main a forward masatu ni chak sim sima I engma verify na nei lo a chiang lo po selowin I khatiang chi han the dar ngot me yang chi mo khatiang chek te kha omlenga chuan chu mi pia lama chuan defamation hei hi kan tun lai pe chuan la luar khop maya ni china ka sai zoi tho false rumor ang chi te po nen kan kal kop thei chu ani de rolin defamation ajan mi mal taka in beinang te po a huam tel thei le sualanga mo chung chi chu kan ton lian sual deuh chu nianga Mizoram chi chuan hemi nia poisa a in boom na ang chi hi atam maya I hemi chungchanga hianin puzonu na hianin han soifia deuh selangin poisa in boom na he I kopon te alone te ti te niatin bank ming ho te pon ti mayang mo khatia ang khanin I enge KYC kan ti te khatia ang update ngai ti te khatia mang te khan in boom na hi tam maya hetiang anga kan lo in a in boom na anga ka chu enge kan tonga kan sha a kan lo invent theina tur la ya kha min han shit le sela lania puema sa soyang khanin mi kan cyber crime ton jinga hian za somre do ni chu sum manga in boom na sumin chu sakna ang khani ta chu da chon hei khofela lo chang kang zela
ain bum dana po hi adanglam chhowe zel tani antinan atir lama kha chuanin kha mobile internet banking te khan ti chhotana tin ATM card te kan mang chhotana bank kami ni om takim mi han phone a ATM card to thidona ti nan chu ti khati te pin in dil chu te kha om thina ni khating khal om tho rolin tu na jan amaro chu kong sang sangin kha mi detail mi bank detail in lak sak dana kha lo chhotran ta chun chu ta chunin ne athil thleng thin tun lai mi ho hi alwar zol hi kan hriat hi poimo khop me hatiang kan ton pal hatiang hi in bum na ni hi ti kan hriat nan hian eng mozat khan soi chin ngal deuh lang duwa tun lai taka hian complain kan ton zinga hianin hey phai trainer on phone a hey minga parcel thona hian drugs tam tak man chuania chuwang chuanin nangma hi police non bedon che ti angin courier mi te niom te non phone thina ni chungatian ti nu khanin video call ngai khan police ni om tak form ha kha aron bele thin ta ni ti khan aron vo chota an ti to pa chuan poisa iron ti phutangai ti boka khana lut le a khati khan sum tam tak lin chu sak na hi om the chuwang chuanin heta kan soi du ma sak bera chu khati ang I parcel ti khat chi khatane pakhat le chon I phone number mang hian midang na sataka ti boy ni crime commit nan manania nangma adar ne link ve tho number pakhati omati ten anon ti thina ni khati han anon ti thai phota ti khan police ni om tak khanin uniform hatlap khan video call khan ti khan aron bum chole thin ta khatlai kan she tu chu khati ang call kan dona police ni om tak te pona se dang tramiron bi ni chuan hetlai kan police station ate report a an har sana ron soya ti thil khen tak tak ani theile thelo te kha zo angai ni tin zo ngai pe mi lama han kan soi du pakha chu ti khan kha teng eng thil khen ta se a direct in se dang police kan ti khan eng lo te kha an ril he te khan on bien an ti top don lo wa chu wang choi kha teng kan tong ni chon in boom na ti turang ai pot kha apoi mo ni chuan an number le kan ti to na te kha kan police station te HCID ka mat bon akina number te le a thlen na te kan in shrilanga khata khan report masak kha apoi mo khop me chuanin chu lo le tun lai thil theng athar deu ni wang hen kan soi tel du boka chu hey thil online shopping ka tin na sa ni tun lai khoi aponia mi zo te pong kan tin na sa heta he kan she tu chu hemi kan parcel lo thleng tur information hi alik ve theini achana teng courier service delivery poi an security te atha tok lo tin enge mi fel lo thok te pon om venga kan parcel lo thleng tur hi an she ve theini khami manga mi miron bum to chen bum hi kan ol oi me ni entinan mani kan keson pakhata chuan hei parcel lo thleng dona chuwang chon hemi form hi ron fill up photangai te parcel lo chang tan chuan oi ol tuk ta ni khada khan chuan hei lo fill up na link hei google link form a khan thil poi mo document sang sang fill up na tur kha ahan peta khata khan an banking details jong jong te an fill up tir thin ta ni khati khan an parcel an thleng don ti hriat mang khan ti khan mi khan ming ten hriat thewang khan e khate khan bum ol emema khata khan tun laia luar de jing mi pakhat chunia chuani kan sei zai lenga tamang renga achan chu kan hria dangai ni khata khan chu chuta chiang sa ta chu kan sei du boka chu mi in he form hi lo fill up te link an on thon ang chi re fill up mi lo tur ni a him lo a enge kan detail engang oi om tak khan kha form ama website oi om tak pron siam the ni ama ro che enga tar nge ti ching ta kan share lo thil tin parcel dong turin form fill up angai lo sum shumani kha kan share danga ya chuwang chonin hey link kan on thon kan detail fill up tu na chi hi chu kan verify fe ni lo hi chuan ti lo phot thi apoi mo ni chuan chu lo le chuan tun la ya hian hey online hian loan lak the eng mo sa thi om ni tam tak oma app te oma all something cheng sang ni sang thum pu mai the na te hi om ni a thleng poron thleng nge ni chuan in amar chu henga hian a thlen do na khan a thena chuan in bum dan chen hi om thina a thena chuan an detail tam takan dila an thalak ten ID te jong jong chung te jong jong chuan loan kha ti khan sang thum ten han peta an rul ti ta an rul le zo nu a po khan na sat takin anti boy thina ni deal poisa deal bel khan ila ru zo lo tin an thalak nei te tian anti danglama he ka the dar don I chung te jong jong le number po acha information jong jong lo collect to thina wang khan ti khan an vo thin ta hemi kan loan online digital lending app so he film khur em mangaya atak nge ni khoi engmo company financial institution na in link thange ni ti kan treat lo hi chu awesome hlema se loan lak lo nan hian online lending app chu ring hel photila hi kan soi du boka chuan tam tango pakhat le kan soi le du tun lai bi kha chuan in kan soi le du chu he bitcoin ti te la ta cryptocurrency te la
ta ni mi tam takin hre chiang lo hian an hriat chian lo man tangkai hian man tangkai mi sual te mi dang bum nan an mang fo ni so an ti dan kong chi ni om ta pakhata chuanin hei mi then khat hre chiang lo tur a an rin dewa hi chu a hlok zia hril ringot khan a ming bitcoin ti khan le cryptocurrency ti khan mi kha a thlem ve the ni chu khami mang khan poisa an lak sa ka invest anga chuan tam ta karon le lenga ti in kar khat nu ate a let te poisa kha a han peleta amara chu khati an ti no khan atang le nge thina ni chu a mol chi ti mela bitcoin a ming ringot pokhan mi an boom the na ni ta chon pakhat le chuan he puima sa te poina tak pon an chui fo to khami bitcoin invest na ang che app lem te po hi om ve ni khan poisa an thuna an poisa kha pung ang chi na lang ta khatia khan amara chu lak chu tak do khan lak chu tur pakhat mo om lo chi kha om ve ta ni chu la ya chon kan hre tu chu kan invest ve du heti cryptocurrency te chu invest ti tam tak lok pui le enge invest make te potom to kan oma adik lo fe kan ti na chu ni lo amara chu tiang kan ti ve do no ni chuan kan in sir chen ma sak ngai ni khoi nge wallet rin tlak khoi nge exchange platform rin tlak ti shelo chunga a hlok no ring to kan ti ni chuan a risky ni ti kha kan soi ni chuan khati kha voi khat poisa kal to chuanin he tiang suma hen kan hre tu chu bank account na kan thuna chu mi bank account na chuan tangin chui thenga ti khar lu chuan om ve lo thei lo a kini te pokan chui tan na ma sak na pon nge amara chu he bank account shal hi kan lo tamani mizoram a ponia vairama te ponia khatiang mi bank account lo shala mi bum na na an poisa lak lu na na mang tam tak kha oma anei tu te ni lo khan ka chui konga pokhan har sat na tam tak kha athlen thine chu da chun kan soi tel du bok sa ma chu kan thalai te hetiang a cheng sanga sangri thenga bank account leidu te poin omani hei thil risky lu tu kani kha bank account kha mi bum na man chu an chui tan na tu chu ke mani khani don ni khatlai han kan film khur em hetiang ti kan ria ni jon I kan lo ti to pala ni pon kha bank account khan kha hack account hi ka kol to lo mi lo deactivate sakro ti kan deal emo khatiang ti kan ria ni jon akhon khom thin de kan ria ni phe jon police na rang theng ber report turin kan cha du bokani chu tun la nge sum ma in bum na alar zual deuh kan soilan du deuh te ho chune apoi mo bera chu kan details poi mo ang kha online han in share tir lo khot kha a him ani deuh ber me yang tero ke mani inven na tan andi englo mi in kan details anon deal hian abikin kan hey tuna chon kan hunga social media te po account it hack sakatamani an hack ta sakna chu an mirin takte an thien te nge account an hack to atangin hi code aron thleng do ne phone a milo thon lok te tiang chi anita ataka kan enge kan mi hriat chian te no ni awang khan kan lo ti vele be chang te po khom thin ta ni amaro chu kan hriat tu chu online hemi social media khovel ni chon an mani ni nge ni ti hi rin lo tur ani enge mo thil ti tur mo thil thon tur min diran umre re chon ring hel photila pedu lo photila a chu chon phone te pon mi ron dil me chon mo tak tak ani kha chon ti atak te pon in dil theina ta chu a chan chon identity kha khati kha an mani nge ni ti hriat the ngai nom to lo chu wang chon kan details abikin banking te OTP kan don ang chi te phe hi chu kan pek chu lo shim tu ti chen chu chen ve omaro chu mi bung mang na chu na kong hin se ve ni khatiang kan buai dan lai takte lo ni ve tin oi om ta kan no ti chuan le mi ti thai ten mang ta khatiang ni kha chuanin lo englo ol thin amaro chu OTP ang chi hi chu le kan banking account details hi chu khoya ma pek chu lo tu ti hi kan in sil non fo angai ni hetlai hi chu ya kan han shia a mi soi te po kan han sha china ma se ke mani chunga lo thlen hianin poisa thil te lo ni to phe hi chuan lau thon na nen hian kan lo ti le mai chin ni hian alang dewa kan film khur angai hle maya zan ina hemi kan hun lo ngai thatu te po in kha kan von reng angai ni ti kha lo sha thar le ila ti chuanin zona zo the kan ti to kha SMS mangin zona zo theya 9436390706 le 9612500830 khamia te khan zona azo theyani chuanin pu ms kan hi kan zo tanga tuna khan kha financial poisa lam panga khatianga in boom na angchi kha I Mizoram kan nga a enge tun lai alar Mizoram poti ani chuang lawa khovel pum pui ang khan ni ta mizo ji nga han ti taila khati angchi a khan kan alo ti swal tu kan va angchi a khan mizo tho ti hi kan lo tam ve viau thowem ti lai te a kha soi chwa chi ani em o katia khalai kha sha ta cha kom reu me ya ava boom tu ati kha
mas tuna min zona tak kan point kan tian main tuna malu ka pui na ron so ya kha I bel lek du kan kan en lo photanga tun la ya in bum na lar ti ji nga khan mo I tun na ya I langsar de ron trending de timen cybercrime chu acherenga ngan ni tin thil hi acherenga akal kwal renga in bum dan thar tar poron kal renga tun na kan ton tam em pakhat kan soi bel lek du chu I gpay poisa in thon sual ti hi tun la hen phone call an donga anon be boita kha account na gpay han poisa karon thon sual lo chia cheng sing thum karon thun sual pala kha khong in min lo pelet le te tiang chi hi kan tong hem em mani chuan anon biak mon mol la kan tuna chi kan kha receipt pokaron thon ang chen de receipt lemon siam chapta ni whatsapp ina mani kha ka te in biak boile kan aron thleng eman ten an ena kha receipt transaction receipt lemon karon thleng ve me ba alem edit thei kan si anni kan benga changaron kal le kal lo chi talen ani takhi tia poisa sing thum ron thon suanang kha pelet vele mai ngal an ma ani account na poisa lu le lu lo chi shelawa pele ngal mai thin kha tam taka noma poisa loss ponom nual ni chun kha ho ka chuya har lam pang kha chu engpo ni se mi account le mang te nan bum twala ka chu engpo lo ni se san pakhat le che fake dealership chung chang mi jawa kan tok tam mema sum don na hak zau kan du ve lo mani khatia khan online na nge khoyang franchise mo spon eng dealership mo agency mo khatiang kha zong online na zong pop pop ang chi mo google and search ta pa khatiang khan online khan website an jumuni chu chon ju dor wala to pa chon asum lo ma lian big to thin ta khatiang dealership lian me wa chon mo noi som thum noi som li khatiang loss khan tam em mani kha kan soibel ni se chuan is imizona point jok ta kha financial crime kan ya puina soi pujona na soyang khan 80% bor veli financial crime ani ganan ti ta tra khang ho zi nga khan amizo tu na kan ke mani case bi ka chen mizo hi chu atlem za somret kan ti kan som ni % mo som thum % vel chu mizo in bumang ta chu omma na ma se atam berzo ke chu vaira ma changaron bum soile chin la in bum dan sang po kha kan sub categorize veni thana lam police station a chuan indian sipai lem anga changa in ron in bum ti te ni china kan se KYC bank lampang company lem atang ron phone ang chi te mo chuan he ta loan extortion ti te engem mang in bum na chi sang mang khan vaira ma tang ron kal chu khatiang de vek khani mizo ina cyber crime poisa kanan lak let theile missing man tur kanan mu tak cyber crime ni lo chu han ti dot thei lo ma se a reality ta ka chen hei mizo hi kong le lama chen mi ring ma chi kan nia antinan online amo thian te mo ma mail sheet te mo anan in be tlang nel ve ta de ka I poisa khalo pukluk te nga ti vela mo a chana ka chu eng polo ni se khat tiang anga mi ring mei chi tam tak kan ni ve ni chuan poisa in puk saka mo in bat sakang chi in pele du lo mo khatiang chi kha kan ton tam taka hin oma khang ang ti lo hemi cyber crime tak kan tiang deuh tur organize tak ang chi ka mi zo jam tamlem lawa kan china kan seng chi army scam kan tiang te KYC update ngai bank fraud tang chi khatiang ko rang chi engla call center ang deuh thoina no mani engeng organized crime anom ta mun khat che lo po ten social media network man in thun zoma ati dan tur zong he ta in lo tu abbe tu tur asipai le ma chang tu tur amo khatiang zong kha anin organize lap thaini khatiang kham mizo tu na kan crime mizoram crime ma chuna om ve lem lowa in rin tok na mo in bum na satli ve tak mai hi emai satli ti chu moi chi longa khatiang kham mizoram na kan cyber bi ka chuan kan man hole kan siat theng ka chu ani tlang puya eta organize ta ka mo ngeng intellectual ta ka ni va buma va tiang chi ka chu kan nei tamlem lo chuan kan ton tam tak chen khat chumi khami chuan ka account min heka ti hi a om thin ni cyber crime ni om ta ka lang hi ani na chen chu om maro chu ani na ta ati tu chu antinan account mi thian nuin allow deal che for example mase thian nu ka ian zo chen chuan ani po kami nan lo ti sak to khatia in khai di ta kal chho du to khani wangin ati tu tak chui chok du chuan heta mizoram ni le ta chuang lo ta ne khatiang chi kha ani deuh tlang pui mizoram kan ton tam tak ki chu ala engen yang man te pon la har sa lo dewa
maro chu vaira ma tanga organize ta thil ron ti thlap toi chuan he ta mun khata an operator thena he tan ti le kha tiang chi khan ye wangin aman lampang chula harsa chi deu thu de na si tlai nichina PMS soi kha klem kan belle do nichina ha dealership chung chang alem internet mu ti kha tam em sum lompo akal na sani khata han chuta a invent dan tu lai kha poimo ta chu khati Google kan search kan thil mu hi oi nga lo turani customer care number ni pon entinan Google achung an shenga fakna alei thei tani search lang ma tur te pon kha kan thil kan search one website ren kha aron lang ma sa ta sponsor ti ni ta then customer care te po kha alon lang ma sa ber kha adik lo kha da ve theni entinan company party dora customer care ilungoi lo customer care number lemi biak fu chon an du tu ti khan amoti ha kan min bum char char do na tin nichang soi dealership ang chi te po kha website an website lem se mi har lo lu tuk ta ni athiam tan chon minute so ma website oi om takati han an tar lang mai don ta company ming khan chon khatla ya khanin sum don na sum tam tak tak involve ani te pe hi chuanin entin mon kong dangin verify le ngi tu ni ti ve to ten omem tin ama hmuna zu kal the zu check the ni lo point ama ni lo beto tu ten om te mi review te chiar the te omani chon khate ha kan ti sam sam kha angai ni ti lai kha internet a Google kan hmuhal me pe chu han ring lo de ngal ila ahim jok ma ani ti lai kha kan selang achan chu alam siam hi ole me ni ti am ta pe chu tun la ya chuan in hei nge kumtling lo kan ti me nga no pang la thlengin smartphone kan ne ya internet kan access thei vek box ya film khurangai hle ni ti kha nge apui tling jok po boom kan la ol de ulai khan mo an no pang jok te tan po invent kha ngai hle don ni ti kha asia ta ti chuan in hei tun lai in chanchin thar lama te po kan shifowa sexual lampang ang chi ka tyang nge mi pat me chiat na chungchang han mi kan mi zo pui te nge po han man te le khati ang chi te chen pe chu kumtling lo te pon oma khati ang chungchang kha han zo dan em po ka shilawa azaw de hlekin khati ang anga enge a shem na lampang thlengin le kan a him na dan kha poi mo berang chu tiro khati ang chi te po khaloni ta sela puzon nu na hian han soi ma sa sela nia tun lai hen khati ang sex video ti mela ozon join le khati ang live kan ti me tiang hi alur ang reng khop me putlam sa pram lama kan mu ang te kan enton te poni anga ma se kan hriat tu chu tam tak ngai dana chuan then khat ngai dan tila a chuan ke man ka duwa ka taksa nia ke mai mi then khat view turin mi zong zong ma tar lang pokani leinem ke man ka duwa ka tilanga duinan ena lom ti ang ngai dan te om the amara chu khatla khan dan kha poi mota dana chuanin khati ang za morom kai shim publish mo khamit the dar a the dar tu ni amo lo siam tu ni te khati nga ashim na ne me ma big takin sex video taka page on kumnga thleng ITX67A mang hian kumnga thleng lu in tang the shem the ni kan du thu ni mo mi pakhat chau en turing kan ti po ni se kan transmit kan khan live khan mi pakhat chi lo en po ni se an live kan publish chuk to ni chon dan kan bo che to tho ni khatlai ha kan hriat chin em ngai chon chu tiang chi chon alo the dar tu te po kan film kurangai ni khami dan mang chi khan a transmit tu ve tho kan ni khami lo the dar chong tu group lo post chong tu te po he man vek chen chu ni lo nangin amara chu kan hriat tu ra chu har sat na to ve the reng dan bu che ve tho kan ni ti lai hi kan hriat a poimo chu wang chone hetlai hen kan zawai kan film khurangaya mi te pon an ti lom internet atam tak mu tu ro lom ti kha tranchana ni don lo ni acha dan kan bo che miu kan dan kha ani miu tin he kan singa sabro ma doesn't only friends te larta he min nge abi ka n2 poisa choya n thei bi nang chi te po khating only friends lo te po he apsang sang india ma te po lo ve ta khating chi kha chon khating kha private ani a du chuin an lom ti ma se india mi kan jan india dana khan kha phallo ani tho ni enge man join mi thlem te chen on po ni chen ka soyang khan a siam tu le theder tu amo a theder tu emo kan ni chon khami dan kha kan bo che tho sex video the dar shim thien te thon thirin kara in thon po he dan bo che na ni hetlai a siam po he ni tin a bikin kumtling lo te phe chu a the dar tu lo ni po kha shem na kha na le zul ni khatlai kha kan hriat chin nga ya chulai a chuanin ni mizoro mate tu nang haya khais a omzo zowa
a thalo ang nan khop me la chu wang chu heti anga a chen a theng to pin heti ang hi nge a hlur lo nan hian ki ni ma kan na savetin police ba ka he women commission te po an chang e ma kan thok khawa hian heti ang hi ti rem vek thei chu ni lo mai theya amar chu kan the pinga chon hei chu ti top tu chon e ka than chang ve thin ani a chan chu kan society ta ne him lo bi ne kan che to bang hin ni etero kan la mizoram phe chu kan la claim le zwal mi puite kan la claim le zwal la khalai khan puime sa khan an soi bel du nei karinga kuchumi ba ka chuan yin kan zo bel du chu kha ni e kan shivik thawanga tu na ya po case tu nai lok loka kan han ne ya khatianga khanin inge social mi hemi abikin social media a khami a post dar tu zong zong ang chi ade khan action eng chen nge la kan ni ti kha she tiam me yang chu mo kha mi lai kha ka zo belanga khami chungchanga soi bel du nei po khan soi ngal se nia china aron soi zu eng khan a zong zong hi chu har khop mai chan chu social media hian soi le soi nu I identity hi tu ma hian khatiang thil ti du ho khan an mani real account mang hian an ti to big thin si lawa chu wang chuan fake account khatiang ngor ta na man phone number po I khami nen chaw in link mo mun dang man chu me lo te lo ni pe chuan and then on Facebook the page an policy na phal lawa the dar thilem lawa I abik tekin khatiang the dar na rem changa chuan Twitter te lo ti taila Twitter at the po fake account thon lo sim le ta khatiang the dar khatiang chi lampang ju hei man te po kan nei no la detect te po kan nei no to thil thei lo ni lawa Twitter at the po an account ha lo fake ma se thil dang en lo eng po lo thup ve de po ni se khami an post na URL te mo khami a channel a video mo kha kan nei chuan chui chwa thei resel chuan ya chuan aza tang jong te khachun sei a har dewanga mara chu pakhat tun hayan lar ta chuan al up chu kan soi le soi no pakhata khan a video siam tu chu omani chuan a siam tu chuan share ana ya chuan a post dar tu in share ana I bokta chuan apps an man te khan I share an nei bokta ngani ti chuan chu changrualin thil kha heta clayrol tila I lano pang tak pakhat kha helaya kha channel nei tu ti maila khami a transmitter tu kha som tur kha zong kwal ve ta ni khatiang ti du omang mi poisa chu tiang khatiang chin hlo don ne tianga som tur te khan zong ve to ta ni chon an va som thwa a om je ber chon pon video chang tur in som ang thuk ani ti mayang mo khatiang khan an som thluk thei khatiang an lo om chon khating video kha I live in an lo ta kha an channel kal tlang chuan I tu mo en thei chu only fans kan tiang de type lek a poisa pitan chu en thei tu te pon an siam ta ni chu ta kan soi bel du chu tiang apps manga lo delete out timang lo delete out tila lo publish tu te chu kan an man tel ve ta loma mar chu khatiang apps kal tlang an lo ti poisa mangin anva enani kha lo screen record le zel chumi chu heta all sam zo ka lo publish pay to chuan khating han lo om vele chongni khatiang chi te po ka mar chu har sa chin te oma har sa lo de te chu man te po chu kan neyanga amar chu zong chu haranga mar chu chu mi pakhat chau henan publish to lem to lo ta khatiang lo record ta khatiang lo nei thei ti mai la hai tun la ve chuan social media hian mi zo khel lo apo hetiang lampang chi in thon kualna group ti neu hi atam lu tukani mi kanan mana thalai de te hei thil enging mo zona kanan zota khoi group ange ti te kanan zota khatiang khan I ami puingai thatu te pokan cha du chu mania kan khe suilai pakhata khatiang video viral chungchang khan sikul no pangkan kan ko ani timang kanan azo thupung tur mai kanan ko kha khoi changya mu an group mu na ho kanan en khan an du na group kha timang mo khatiang lampang kai noi group kha nga ta hlomani chuan midang kana te kanan chui zel kan chuan nu le pa te kan ko tel thin boka chan chu kumtling te pon dia kumtling che lo ten lo ni phe chan nu le pa te kanan suai tira an nu le pa te mu tir ngam lo khatiang group khan nga ni chu nu le patam tak boina lo an lo ngai thak karinga lo sia se kan du chu kan fa te hian social media hian internet a hian inga tan nge social media hin man
ta an zirna te le nga tan chon thil poimo te me chu ni phone te po atangkai le tu college student te pon tamang class 12 te an phone chu tangkai mas an phone an khoi zong zong wa sia ta harang tun lai privacy ne an lock te pon lock ang chu amar chu akha tokin enge I thil thalo te lo ti ve nge tun lai cyber crime nuar sia I thalak du tak lo te thi de te khating te ti khatia cautionary ve de achang tala nu le patent thu an fa te an lo sil chet te kha azong zong chon zom lo ma se I lo lok pui to kan om ka be sei bo kan ni ni e kha thil poi mo de nia hetiang ang khatiang chi thu boy aron khan kumtling lo min kumtling lo ang chi hi aron retail vele chin box shima chuwang chuanin mi puite anti me yelangin kanin ven film khurle zwal kha angai hle meya ti chuanin tuna chuan khatiang kha a video te a live ang te kha kan shat tharle zo kalo ni ta tun ma de khan hemi thalak thalaka wanga han invowa khatianga har san na tok te po khan china tuna po hianin ala khatiang thil khala thleng thei zel ani kami chungchanga khanin enge in alo inven kan thalak te kan lo pe to ni kha chuan an lo nei to ni kha chuanin an ni khan ti khan miron blackmail na ne mo miron vonan te an mang thei ta khatianga khan engtin nge ma lak tur ti kha puzon nu na hi kan zot te ang ania atir angno translate ela a begin thalai te hei ngai zong ama chuan camera te khatingin omreng lo atin in thon na te po kha boi thla tu na jon ol something thala in thon ola in kom nan te kan mang to wang hian chu wang chuanin kan soi ma sak du shum shum chu ni tun lai hian video call te kan that to ni te kan film khuranga kop ma chan chu case tam tak kan nei hi in ngai zong thin in ban in ngai zong to lo nuwa khatiang har san na tok thalak nei to manga in vo ang chi tam kop me chu wang chuanin kan cha du chu hei thalai ngai thate kan lom takin thil kan thon dar to ni chu kan rilu tui to kan thu post te poni anga nakina kan nu le pa te muwa kan la achan chu are lo ve the ni thil voi kha kan the da toi thui ta kal the ti kan thri da ngai kan thon chu ma kan ngai tu thin tu ra chu kan nu le pa te mu tang kan du em ti de kan ngai tu ngatin thalai te da be chu kan ngai tu cheng una nakina kan nu pui pasal tu no mi ngai zong khan ni lo mei the ani mu le tan te khan ka du em ti te tin nakina nu pui fanau te kan la nei the a khati huna khan kan fa te thleng khan an la mu ve the thil khan ni ve the ni voi khat kan thil thon chu toi chu wang chon kan thalak thon chu le kan video call kan thil ti lan te kan film khur ngai khop me chu atma saperin kan ngai to na sa da ngai thil kan thon chu le kan thil post chung changa hian ti hi kan choi ma sa duwa chonin ni khati han har sana to kin om je zowa khati har sana kan to kan I chon kan seng de khanin cybercrime police station te kan oma khati han ma ni shom tura rilu kha om tur ni lo ni heta police station aron report nge ke nin the potop so in khatiang ti re tur le enge dan anga mal turin theito pon lo chu thina tin chu ta chun nakina te pokan sei thong report na helpline te po omani khating de nakina nge akhar main kan sei ching de hlok joking kan sei nga chuanin khatiang kai noi de thua khan hami video phone ve kan sei ta san china pu ms kana sei zoi to a video call chung changa khanin tunla hi alure mem boka facebook a abikin mi pain tu an tong na sa hetiang hi namdang mei che tu emo in mel thobe takin account train train friend request on thona tian facebook messenger on betana whatsapp number ten in dila ti khana rom pe zui thina ni so whatsapp a han kola a mei che jok chon korte phela in phel vero te ti khan lelama khan mei che telom khan screen han lo record char cham ni an lo record a nu khan khami screen record ne kha friendbook a chu facebook an friendship to nu wang khan an thien dang te po khan theveka an contact se pon ria khata tang khanin khami release tur ang khan ai se poisan dil lui ti chen blackmail ta thina ni ne sa takin ami padan chon mul po thak to sia khatiang khanin khatiang har san tok tam takanum chu ta kan sei du ma sa chu sina ka sayang che khane an ni na kan chiang theilo kan ti kan rit thinga ya social media a kan hriat chen lo miron pe tu te hi chu rin helangai ni biak that lo tu ni ta kan hriat lo na hi chu lo kom ngai il tuk te tin se teng che mi paina har san na ton chu tun nai thil deu ni ta ma chon facebook kan koi tan tir pe ka chon an mi zo munda ga te ponia kan mi zo me che te ponia heting har san tok tam ta khinomani sapa sipai bang mo inti na non bi ati khan tharuk
kum khaten on be photani hatiang ha chang ngai zong te lo ulve ta khatiang nu khan hei parcel karon thon che tiang chi na ti chawa chon parcel khala kan minglem chuang thlap thala kan on thona anu kar khatvela vai pain ka Delhi airport vel train yom ta in kha parcel thalak to negan hei parcel lo thleng don khul chuanan chumi text chu pek pot ngai sing thum singan te hanan tin te nuai thum nuai li nuai nga thleng khateng lo chan to te khan omani chuwang chuanin mi kan hriat chen lo Facebook le social media kal tlang chun biak tlang ne lutuk lo hi apoi mo khop me khatlai kha kan soi le du boka chuanin khami social media bi ka chon nichina ka sei chu in film kur invent theina tur pa chu ma sabber chu ka soyang chon kan mi hriat chi ataka kan hriat chin lo chu biak tam lo khani phot ta ni chon pakhat le chuanin hei nichina kan soi to kha kan soi tok to Facebook le Instagram account in hack hi tama kan minon hack na san po kan thien te kan rin tak tak te account ten lo hack to wang kan khata tanga minon biaka code te miron dila ni chuan lo pui mai he ka account ti nu na mi lo pui lok thengem tiang chi kha le khati angkong dang oyom tak tak khan kan thien te account ngi ta khan on ti kha om thina wang khan khata poi mu em ma chu ama sa chon ka seng khan rin lo tu ti ba ka chuan kha atam tak chu kan thrianga ma se shelo kan lo le lo lamang lo hi kan oma social media account ne hen two factor authentication hi omani om ji chu khate password mai ba ka khan kan phone number te kan link le chu ta chuanin pin te lo thleng thina ni khami password pe lama khan kan privacy setting a khan two factor authentication ha kan on nge hi ngai ni chu chuan na satakin hemi hacking laga hemin pui theini tuna an account an hack to Facebook te Instagram te account an hack tam zo kai chu khateng on lo two factor authentication on lo te khan ni tlang puya chuan kan thiam lo ni chuanin khateng ha ashadeu te zo ta kha tin nge double security tin soila ol samjok me ti kan thri thiam nan khami khan tinge ka onang on the ni ti kan hria ta a on da na kan thiam ngai ni khlai he kan soite le do sum ya khan jinan soi to mi bum tur shima thataka nalo thok polte an oma wang khanin pol khanin din top mai pol in din thatak mai khan lo oma wang khanin engtika ma re don lo ang tluk khani a chuwang jang kan film khur theina pianga kan lo film khur kha heng laga kan invent theina chu ani a ti chuanin hei tun lain abi takin kan tianga he politics thila te Mizoram bi khan soitaila politics thila te mi chanchin hei moi lo tak tak te han soite hi tam em china abik tekin Facebook at hena tam le zwala mundanga hi chuanin ala zia dewin ka share a Facebook te bi ka hena tam em a heng ang chi te hi engtinge ka zong o engchin hi nge poya ti mayang khati ang chi kha engchin hi nge kan ti tur engchin hi nge kan ti lo tur ti kha a zaw viawem o chu ka ti ma se a poeme san han soi se soidan tur she mayanga ani kham hemi mi chungchang kan han soina te mo khati ang chi shima khan dan phallo eng hi nge dan phallo chin eng hi nge kan him na chin ti ang kha nia ni china kan Mizoram ina cyber crime na kan ton kan criteria ka soijing khan false rumor ti tele defamation ti ang chi ho kha hemi huang chunga neng mo chen rin lu theyanga ama sabirin politics ani lewemo Indian constitution hian right to freedom of speech kan nei ta ni du soi theina ti maila mo all some zong in amar chuk du kan soi hi dan la lo phalvek chuang kher lo ta kan soi kha midang ta na phuthil poyen hiam midang huat tura omem ti la ya kha apoimo na a criteria right to freedom of speech criteria pakata lo mangtaila midang tan poi thei thila omem ti ang zong in chut taila politics thila chuan kong le lama chuan khalai politics chung tak chu keini dan la fa soi te du theini lo maro chu abe bom thila om ta ni asoi tu poina adik lawani ti asiat ngoi evidence po anei mi lo ma se party mi mal party pakhat ham thatna atana fin na po chiang mang lei lo thuan pos ngot khan he lampanga atwar tu party mo atwar tu missing mi male ma po khan complain a thelu thaini chulai chuan chu party khating jong kan soidena party in ti ming chiat nang te lo ni ta chu engeng defamation kan ti in ti mol phona khalon ta chu ko ta ten kal tam aggrieved person alungoi la ko tan han kala ko tin cognizance salola cognizance de mela chui phalna police ne na minan peta kan chui ta ni kha an post siam kha adik nge yem dik nge lom ti kha chu
ke ni pongam selo ti ani na taka chon asiat ngal lo anga ngai taila march investigation kanan nei ta a post tu kha anonymous timeng loin da thukru po ni se kanan se chuak ta khoya training he thu hi sia thei thu dikani chuan thu dikani lo chuan ti zona kanan siam hian chan chan base an lo nei lo chuan in ti pol phona chu akon su ange alo tling ta che ta ni chu ngam da na nga sem chu an phu ta ni amara chu kong le lama chuan han ti vele thungi la chen khat chuan kha an rai ta kha I mangkim takin te ma mo I thu dik kei kong le lama chuan chemical right to freedom of speech te po ti maila I sarkar khal ngin la te po kong le lama chu achangkai ni thu dik si sarkar ina mo mi mala mo pol ina mo ko sana mo NGO pon I ti dik lo te po lo nei thei ni NGO mo pru lang te pon thil mi te pon lo ti chiam mai thei khat tiang khal ngil tura alo soi sel tu te ma mi thil ti dik lo chan chan nei mu mal sia an lo soi fak hian te ma kha khan I kha pol mo kha party mo kha a khal ngil ve thei thoni chuang chan I asem theile apoi mo lai ber chu khalai bi ka chuan kan thil soi khan base na yem thu dikani em chan chan mumal kan ne em ti la kha ate funga mang taila chu ti ni lewa kan party ta na lom kan pol ta na lom kan club ta na lom ti wang ringota I midang va soi chiat ngal ngot base nei chuang me lo chan chan evidence po nei me lo in atu he lai mi ina alo soi to pakhat kha chu ting de chuning kriya te phua bel tamai mo khati ang vel mai me phua bel chu anu lo copy paste lo kala anu le ga mi chuan claimin alo phua turu le be de phei to chuan kha athu kha serious so ta tul thei ve tho ta ni chuan ka politics sil che lo ni tang se chu khatiang thil post kha chu soile taila false morang chi khan ain kai noi tho wang chung ko te mo group a mo chumi khami tha te ti te mo khoi chulai khola mi thian ho ball big tiang te khan khatiang thu dik chi lo deu kha an lo soi ta ni chon an mani jing mi in ka nan mai tem bo an lo mang thei joke sang te mo min prank nan te po an ti kha sar kul te kha WhatsApp group mo kha Facebook group tan cho sia mani kha thilaka ma se kha tu mo kha na lo ti leak out ta ni khata che kha chuan a om na tur muna om to lo chuan adar chu to chuan he ta khoilai mi an soi tan chun aril runa thak dei to mai thei ma se lai group chung khoilai particular group mi big tan chun fiam thu ni khatiang te kan mun le mun a zirin kan thil soi tu chu ni chen ka soi ma sak pai thale de tho si thu dik lo te po a soi na mun na zir te chuan fiam thu ni ti ma ngo a se tur te chau ina ni chuan chung ko te chuan chung ko khoilai chung ko mo chuan tu te mo te pon lo rel mai thei chung ko bila chuan eng mani lo ma se a chhuat che chuan mi poi soi na ni khatiang deuh khan kan soi tur chuan base na yanga I evidence na yang chu tiang ang alo ni che lo kan lo ti khom kan lo chong du da deu ni pon a soi na mun tur che chumi muna bak son soi thiang lo ni tur ani ase kha chu chin tam lo a tha politics party politics kan ti mai ya chi dang po kha akai ve ka o kha azaw de ubertura ka ngaya wang khanin le anni hi soi nu kan mu tam pol mo tun la ya he lar deu ang chi politics in be ina te tam wang kha kan soi mai khani a mi chan chin te mo khatiang te po kha leng vek thawa khatiang ha kan she thiamang chu mo ngai thatu ten a hey azaw ma zan ina cyber crime kan han ti hi mizoram po in soyang hang engkim ha kan tong ve ngal je la khovel dang terwalin I chuwang chuanin malte te han soidon mo a in shem na dan zong te mo han soidon chuang kan hun hian min dai don lawa chuwang chuanin puzo nu na hianin hemi chung chang zan ina ngai thatu te na han sia se ti a ngai poi mo zong hi han soi engma zo na in zo to lem lowin han soi phot mai sela chang a punte wi om zin sia tuna kan soi lai tan han dule lo tran tai la in pu ming chin na kan tiang chi kha hetlai kan soi tel du boka chu thu dik lo mi chan chin moi lo tak te lo the darani chuanin kan lo the dar emo hetlai poi mo ta a hnuaya a post cm2 social media post cm2 ni khel a comment tu a te po ani theini khatlai ha tiang har san na tin khatiang case nei to low comment moi lo wang low comment tu te po case nei to no matin kan soi du chu ati chuak tu ni lo mala the dar tu
kan ni chuanin athu dik verify si lo khan khata khanin amo phurtu kan ni ve thei ani ti kan hriat angai chu wang chu kan thil kan the dar main thu dik ani di lo kha ke mani level khan kan the to kan verify ve nga tin engri lupui nge kan the dar ti la po kha apoi mo khop me chuan kha kan soi du chu defamation ti ani me adan na chuan kha kum ni thleng lu in tang thea in shem theina ani mi pu chet na he khala kan soi ma sadua chuanin nichina kha ba ka chuan apoi mo zola dan thren khat kan soi du chu ni chen kan soi chi sex video the dar kha kum IT act noya hian kum thum thleng lu in tang the in shem the ni tin identity theft kan ti chi mi ni na mi thalak te len ming te la kha midang wati boyang chi te kha khatiang te po identity theft kha kum ruk thleng lungin tang the shem the ni chuanin hei thil tamle deu chu social media ataka kai mu thei lo ta ka chuanin mi invo fake account manga na tak taka invo ang chi te hi om thei ta ni heng te po hi kum ni lungin tang the in shem the IPC 506 noi khan shem the ni chuanin in china hei tuna me che tam to gen har sanan to thin pa chu mi pa te na pu do jamo thalak in thon top top wati boy sek ang chi te khateng khom te kha sexual harassment noi khanin aleng thei veka kum thum thleng shem tang the tura shem theina IPC 354 noi khan shem the ni chuan thil pakhle tuna relevant deu me chu khami section 2 nairon om thar 354 dia chuan stalking kan ti thin mi me chi an du lo chunga zui lui kha online upon stalking kha om ve thini me chen chin ta in ka bedu to la chumin ti boy tu suati nuwa wat avati boy lui second chuanin kha kha stalking kan ti ang chi zui lui anga khan alo tel ve thini khatla ya kha kum thum thleng lung tang the shem the kha ani bokani chuanin chuba ka chan han sele thok thil apoi mo zola chuan mi thalo lak ru ka the darang chi mi share lo la video lo la ka the dar te kha ITX noi han kum thum thleng lungin tang the shem a the ania chuanin thil pakhat poimo kan sei chingai boka chu mizo society thil ka chang chun hey child pornography kan ti hi kan ngai thu tak tok lo de thin te hen hima chu mi pornography am tu thonan te no pang saruak ang chi te le khati ang zamorong khai alan na ang chi te hi lo theder ve tomai te kan om thina he hi a shem na serious em kum nga thleng khami lo kol entinan hey englo de han soi taila pornography website te om tani khatieng kha han soi top chon lo en kha dan bo chena jel dan theina thila niam cho chon a theilo ni ani om lo ni dan amai ro chu child pornography bi ga chon lo enamo lo kolamo lo khatiang lo collect shim lo the dar le lo kol shim po kha lo en po kha shem the nia tlai poi mo khop me chu da chonin kan hriat tur ka du chu tu na hianin hetiang social media lian ho zong hian an monitor ani he chuanin kan hriat tu chu file re kan share hi entia ka tiang signet enge an lo chin che na bi kin nei theini khang ho bi kha report on chan lo chin che ve vek ta a thon tu te khan shavek theini khang kha report kan hena ron lut thin ani mande po khan ve khat operation kan ne arwalin mi panga khatiang lo in ham noi lo kolamo lo the darang ha kan ne kan she to ju khatiang child pornography bi ga chon kan thil ti kan lo en le kan lo thon dar chung chang hi Facebook ani mo Instagram ani mo WhatsApp ani mo hiteng social media len hoin an track vek ani ti lai kha kan shred wa chulai chon kan film pur zo ngai ka she chon thil poi mo ka til em che he YouTuber te kan tama news second the da na sa chutana kan cha du big de wa chun ni china kan siang che thu dik tok lo the dar kha shem the ani ti she tangai tin mi chan chin adik le dik lo verify si lo kan lo timol phone ni chon defamation kan tiang che or the nia tin chu ai bo ka poi mo jok chu he ni che kan so ya kan thil tam ta case sam ta ka no pang kumtling no involvement te lom ta ni kha apoi khoi tu ni mo a victim tur tu ni mo kha an ming le identity ta la na kha dani na khapla ta khatlai kha pokso noya le juvenile justice act noya khan apoi khoi tu te po kha an ni na kha talan phalani lo ni khatlai kha kan film khuranga in ka sia khang kha atamanga amara chu apoi mo zul ho ne ka ngai kha an ron toido takin karon sei ni ti chuanin I poime san han soi vele sela ngai poimo zong te chu ti royal chuanin hemi cyber crime ina enge kan biak po theina tur number te report kan thelu theidan tur ang chi te khamin han shil tel box sela nia ngai poimo ti chuan cyber crime chungchang bi ngai poimo tu ri tamlu tu ka I soile soinu mizo te bum kan nom bi ka ma ti tur hian le
an lawa kanan soi ho mai hian state dang he kan crime report don za te len lote a complain amo a ho te ne na han chiar hian state dang ai hian an ngam population base angai tu hian kan tam zo mo na ti tur rum te yoma ma se mi state zon tam sim sima mar ju mi zo kan tem dang ngai tu in boom mi kan nuam in ka ria sexual harassment te len lo ka ju soi to nuala chu apoi mo ber kan ti kan ton tam ber ni financial crime chung chang bi ka hian kan cha du mai ber chu tuna hian kan sum don na te kan mason missing chu mason tum ve kan mason tuma malam kan bona kan ka pen na lama te na kan zon na konga te sum le pai kan invest na konga te kan malam ki ngeng sum don na mo sum pe pun tum na ang chi reng a hian kan zuan ma hian kan zuan na tur hi voi khat voi ni voi thum tal verify la thei to pin kan verify kan the ang chin kan ti to no lo le ma min la bum sa ma ni ro chen khang zong chu invent chu harang ma se step khat step ni step tum tala kan verify chuan tu na kan ton za somri thi chu taniam to kong ti chu ka ring ni chuan engem min zona pakhat zo ka report kan thelu theina tur zo kha ama sa bera chuan citizenship financial crime reporting portal antia financial crime big chung chang ka soile ta bokila financial crime big kan tong ani chuan hi cybercrime.gov.in chu internet browser khan cybercrime.gov.in ti khan type top khan file a complaint ti hi lo langanga ta chuan new complaint ti alo langanga kong le lama chuan ngai ta tu tam tak tan po thil har tlem sap tong te tel ve de nu eva ina har samai te amara chu cybercrime.gov.in ti kha kan type thiama chrome mo browser khan kan type thiama ni chuan ta khan kan lut to panga ta step by step ka chu aron lang ve mai ta kha chu athiam kan tikharai poimo na chane mem chu cybercrime ron kal khan ni sumle pilos kha huna kal liam tam khan poisal recover na chance ka atlem ve pha the wangin kan lo thiam chu na poimo em ani ti khani se chu na panni ne chuan 112 ERSS kan tia emergency response le 1930 call top hian a thei boka 1930 kha kong le lama chuan sap chong te vai chong te than te ngai kwal le boka ma se chuan 112 big kha mizo chonga direct a biak top theina ni wangin kha public khan an se zaw le zual se 112 ani chu khang ho kha direct kan biak theina ho chu ni dek mai alom om hle mai zan ina hun chatak mai kan han mang theya hun rei zok te han nei la tun aya chiang zok ti mai la tun aya detail zok te po khan han soi theila adu om hle maya amero chu khang kan sha chin te po kha kan lo man changkaya kan lo von reng chuanin in bum na tam tak la ka han kan film thei don ani ti kha chiang reng maya zanina hun miron man puya kan lom hle maya tin ngai thatu te po in chunga kan loma khang kan zanina anron soi te po kha in lo hlok pui in lo chhor changkai kan be sei tak zetani hi Akashvani Aizawl ani daret lechan venia sports scan Delhi milak chon hilongai thlangu खेलों पर आधारित हमारा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 हुए और अपने वादे के अनुसार हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन लेकर। मैं हूं धर्मेंद्र और आज के हमारे मेहमान हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ मलय नीरव जी। मलय जी, स्वागत आपका। धन्यवाद धर्मेंद्र। मलय जी, स्विस ओपन की जंग आज से शुरू हो गई है। अभी ऑल इंग्लैंड खत्म हुआ है और अब आज से एक नए दौर की शुरुआत, एक नए टूर्नामेंट की शुरुआत। यहां पर भी निगाहें आपको लगता है कि मुख्य रूप से भारत की अगर रहेंगी तो लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु पर होंगी? बिल्कुल, देखना है कि लक्ष्य को भेद पाते हैं या नहीं और सिंधु कहां तक पहुंचकर अपनी पुरानी यादों को बासी कर पाती हैं। जी, हम आपके साथ इस खबर पर करेंगे चर्चा और दूसरी खबरों पर भी करेंगे बातचीत, लेकिन पहले अब सुर्खियों पर डाल लेते हैं एक नजर।
स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता स्विट्जरलैंड के बेसल में जारी। सुमित नागल ने मियामी ओपन के पहले क्वालिफायर मैच में जीत के साथ शुरुआत की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस साल के आखिर में होने वाली क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच पर्थ में होगा और मणिपुर की टीम सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। तो शुरुआत बैडमिंटन से ही। स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 आज स्विट्जरलैंड के बेसल में शुरू हो गई है। पुरुष सिंगल्स में 7वीं वरीयता प्राप्त भारत के लक्ष्य सेन मलेशिया के लियोंग जुन हाओ के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे, जबकि किदाम्बी श्रीकांत का सामना ताइवान के वांग सू वेई से होगा। महिला सिंगल्स में 4थी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का सामना जर्मनी की यवोन ली से होगा। महिलाओं के डबल्स में 6ठी वरीयता प्राप्त अश्वनी पोनप्पा और तनिषा क्रेस्टो की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया की मेलिसा ट्रायस पुष्पिटासारी और राचेल एलेसिया रोज की जोड़ी से होगा, जबकि ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी अमेरिका की एनी जू और केरी जू की जोड़ी से भिड़ेगी। टूर्नामेंट का समापन रविवार को होगा। हर टूर्नामेंट अगर हम कहें मलय जी तो ओलंपिक के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। लक्ष्य सेन अच्छी लय में दिखाई दे रहे हैं और आपने जैसा कहा कि लक्ष्य भेद पाते हैं या नहीं वो देखना होगा। पिछला दोनों टूर्नामेंट उनके लिए फ्रेंच ओपन रहे या ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन रहे, काफी अच्छा रहा है। और दूसरी तरफ सिंधु की बात करें तो उनके लिए भी अब ज्यादा वक्त नहीं है फॉर्म में वापसी का। आप इन दोनों खिलाड़ियों के लिए इस टूर्नामेंट को और हाल की प्रतियोगिताओं को किस तरह से देख रहे हैं ओलंपिक के लिहाज से? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि लक्ष्य ने जिस प्रकार से सीजन की शुरुआत की थी तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ओलंपिक के लिए प्रमुख दावेदार के रूप में उभरेंगे, इसलिए कि मलेशिया सुपर 1000 और इंडिया सुपर 750 दोनों में वो पहले राउंड में ही हारकर बाहर हो गए थे। लेकिन 22 वर्ष का खिलाड़ी जब हारता है ना तो एक अंदर से उसकी एक और भी जो मन से चाहत होती है जीतने की और बढ़ जाती है और उसने वो दिखाया। जबकि वो फ्रेंच ओपन और ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप दोनों में सेमीफाइनल तक पहुंचना साधारण बात नहीं है धर्मेंद्र भाई। दोनों में सेमीफाइनल तक पहुंचे और इस समय वो लय प्राप्त कर चुके हैं। तो इसलिए जब वो हालांकि 7वीं वरीयता प्राप्त है भारत के इस खिलाड़ी को, लेकिन जब वो मलेशिया के लियोंग जून हाओ से भिड़ेंगे तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए एक बहुत शॉट इन द आर्म होगा। अगर वो जीत जाते हैं तो फिर उनको लगेगा कि ओलंपिक का निशाना भी भेदा जा सकता है, लक्ष्य साधा जा सकता है वहां भी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है टूर्नामेंट और देखना होगा कि ये जो सेमीफाइनल में जाकर जैसे हाथ से चीज फिसल जाती है, पैर लड़खड़ाने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? और जब खिलाड़ी की उम्र कम होती है और जिस तरह से एक्सपोजर नहीं होता है तो उसको अपने स्नायु पे कंट्रोल करने में, अपने नर्व्स को कंट्रोल करने में दिक्कत आती है क्योंकि वो पुरानी यादें हॉन्ट करती हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि लक्ष्य बहुत अच्छा करेंगे, ऐसा मेरी पर्सनल फीलिंग है। किस आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं जिस प्रकार से उनके पूरे करियर को मैंने बड़े ध्यान से देखा है उसको देखने के बाद लगता है कि वो बहुत अच्छा करेंगे। जहां तक सिंधु का सवाल है तो फ्रेंच ओपन में इस महीने की शुरुआत में आपने देखा कि सिंधु का एक नया रूप फिर से देखने को मिला, क्योंकि उनके जो बाएं घुटने में जो चोट लगी थी उस चोट से उबर पाने के बाद उन्होंने जिस प्रकार से अच्छे खेल का प्रदर्शन किया फ्रेंच ओपन में, मगर इंग्लैंड ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में इतने अनफोर्स्ड एरर सिंधु के हाथों होंगे ये तो सोचा भी नहीं जा सकता था। तो ये जो बिल्कुल लहरों पर नाच नाच कर सिंधु कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये उनके लिए मौका है जब वो स्थिरता अपने खेल को प्रदान करें। उनके पास सब ताकतें हैं, उनके पास हाइट है, उनके पास जबरदस्त स्मैश है, बैकहैंड है, फोरहैंड है, कहीं भी वो किसी से कम नहीं है। मगर जिस प्रकार से उनका आत्मविश्वास कुछ हिला हुआ दिखता था अब लगता है कि फ्रेंच ओपन के बाद उसको दोबारा रीगेन करने में उनको फायदा होगा। और ये आपको बता दें श्रोताओं को कि जो जर्मनी की खिलाड़ी हैं युवोन ली, जिनके खिलाफ ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में ओपनिंग राउंड में ही उन्हें वॉकओवर मिल गया था, उन्हीं के खिलाफ ये फर्स्ट राउंड का मुकाबला होगा। तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एडवांटेज, मनोवैज्ञानिक लाभ सिंधु को यहां जरूर मिलेगा। लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अगर हम बात करें सिंधु के लिए सही कहा आपने कि सीजन की शुरुआत अच्छी रही है, पिछले कुछ टूर्नामेंट्स उन्होंने अच्छे खेले हैं, लेकिन वो सिंधु अभी भी नजर नहीं आ रही जो कि खिताब जीता करती थी और जो ये क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल की बाधाएं हैं उसको बिल्कुल अपने तरीके से लांग लिया करती थी। इस साल उन्होंने शुरुआत ठीक ठाक की है, खेल अच्छा रही है, लेकिन अभी वो बाधा
जो क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल की है वो नहीं देखिए, दूर जो हो पा रही। खिलाड़ी 2 ओलंपिक में पदक जीत चुका हो, वो ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में इतने अनफोर्स्ड एरर्स करे, ये बात गले के नीचे नहीं उतरती। जी। और पहले फिटनेस पर एक सवालिया निशान लगा हुआ था, लेकिन अब वो फिटनेस पे लगा हुआ निशान खत्म हो चुका है, क्योंकि उनके बाएं घुटने की चोट से वो उबर चुकी हैं। अब उन्हें सिद्ध करना है। द टेस्ट ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग, पुरानी कहावत है। अगर आप में दम खम है, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, तो फिर यहां आपको अपने करिश्माई करतब दिखाने होंगे। जी। और टेनिस के कोर्ट से चलते हैं बैडमिंटन के कोर्ट की तरफ। स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 आज स्विट्जरलैंड के बेसल में शुरू हो गई। बल्कि अभी हम बैडमिंटन की ही बात कर रहे थे, अब टेनिस की बात करेंगे। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने मियामी ओपन में अपने पदार्पण मैच में कनाडा के गैब्रियल डायलो को लगातार सेट में हराकर शानदार शुरुआत की है। उन्होंने क्वालिफायर के पहले दौर में डायलो को 7-6, 6-2 से पराजित किया। पिछले महीने चेन्नई ओपन की जीत के बाद विश्व के शीर्ष 100 खिलाड़ियों में जगह बनाने वाले नागल अगले दौर में कोलमैन वोंग का सामना करेंगे। अगर हम टेनिस की बात करें और खासतौर पर सिंगल्स की बात करें, काफी लंबे समय से एक अच्छे खिलाड़ी की तलाश लगातार जारी है। नागल ने हाल के दिनों में अच्छा प्रदर्शन किया है मलय जी, लेकिन अभी भी वो जो सिंगल्स में हमारी एक ताकत कुछ समय पहले हुआ करती थी, वो दूर नजर आ रही है। नागल में वो क्षमता आपको दिखाई देती है? देखिए, जब ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले राउंड में इन्होंने जीत हासिल कर ली थी शुरुआत में, इस साल की शुरुआत में ही, और तभी इन्होंने टॉप 100 में अपनी जगह बनाने का रास्ता बिल्कुल साफ कर लिया था, और उसके बाद टॉप 100 में आ भी गए, तो ये तो माना जा सकता है कि सीरियस एक प्रतियोगी के रूप में, खासकर सिंगल्स में, सुमित नागल ने अपनी जगह स्थापित कर ली है। बाकी रही आगे बढ़ने की बात, तो इस बार भी जिस प्रकार से वो खेल रहे हैं और वर्ल्ड के टॉप 100 में उन्होंने जगह बनाई हुई है, तो मुझे लगता है कि अच्छा करने की उम्मीद है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने फर्स्ट राउंड में आसानी से जीत हासिल की है क्वालिफायर में और अब दूसरा मैच उनका अब शुरू ही होने वाला है अब थोड़ी देर बाद, तो मुझे लगता है कि नागल में भी उत्तरोत्तर अच्छा देखने को मिला। उनके खेल में प्रगति के निशान सामने दिखाई पड़ रहे हैं। और अब टेबल टेनिस की बात। अचंत शरद कमल ने सिंगापुर स्मैश टेबल टेनिस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के बाद नई अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। वे भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। सिंगापुर स्मैश में भारत ने जो खिलाड़ी हैं शरद, उन्होंने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। क्वालिफायर के रूप में टूर्नामेंट में उतरने के बाद 41 वर्षीय शरद विश्व नंबर 13 डार्को जोर्जिक और उमर आसार को हराकर अंतिम 8 में पहुंचे थे। और हम आपको बताएं कि जो पुरुष सिंगल्स रैंकिंग है दुनिया की, उसमें वो 88वें स्थान से उछाल लेकर 34वें स्थान पर पहुंच गए। पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे इनके बारे में और कह रहे थे कि 41 सिर्फ नंबर होता है कुछ खिलाड़ियों के लिए, और ये जो देखिए रोहन बोपन्ना और अचंता शरद कमल, ये दो नाम ऐसे हैं जो लगता है, इनको देखकर मुझे रॉजर फेडरर की याद आती कि पता नहीं कि कब ये कहेंगे कि अच्छा अब मेरे खेल जीवन की सांध बेला आ गई। 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में मैं जब वहां पर था, तो शरद कमल ने तभी सिद्ध कर दिया था कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। और वहां से लेकर आज 16 साल हो गए हैं और अभी भी वही स्फूर्ति, वही ग्रिट, डिटर्मिनेशन, संकल्प और लड़ने की क्षमता और इतनी लंबी छलांग। अगर आप टॉप 40 में आ गए, टॉप 35 में आ गए, तो इसका मतलब आपकी फिटनेस लेवल कैसी होगी। टेबल टेनिस आप जानते हैं कि बिल्कुल निचोड़ कर रख देता है आपको। एक ऐसा खेल नहीं है जो आप बैठे बैठे पिंग पोंग की तरह खेल लें। और उसमें इन्होंने इतना बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया है, तो मैं तो कहता हूं कि हैट्स ऑफ टू हिम। इन्होंने पूरी युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस साल के आखिर में होने वाली 5 क्रिकेट टेस्ट मैच की श्रृंखला का पहला मैच पर्थ में खेला जाएगा। खबरों के अनुसार इस श्रृंखला के बाकी मैच एडिलेड, ब्रिस्बेन, मेलबर्न और सिडनी में खेले जाएंगे। सुनते हैं आकर्षिता की ये रिपोर्ट। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से बेहद अहम इस सीरीज का दूसरा मैच एडिलेड जबकि तीसरा टेस्ट ब्रिस्बेन में होगा। जानकारी के अनुसार बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच हर बार की तरह मेलबर्न में होगा, जबकि नए साल पर दोनों टीम सिडनी में अंतिम मैच खेलेंगी। एडिलेड में खेले जाने वाला दूसरा मैच डे नाइट का होगा।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस महीने के अंत तक कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट श्रृंखला की शुरुआत इस साल नवंबर में हो सकती है। ये 1991-92 के बाद पहला मौका होगा जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट मैच की श्रृंखला खेलेगी। तब 5 मैच की सीरीज में भारतीय टीम को 4-0 से हार का सामना करना पड़ा था। भारत ने जब 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था तब पर्थ में दूसरा टेस्ट मैच खेला गया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 146 रन से जीता था। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। आकर्षिता ने जैसी की बात की कि ये 5 टेस्ट मैचों की सीरीज काफी लंबे समय बाद हो रही है और ऑस्ट्रेलिया और भारत की क्रिकेट की अगर बात हो, चाहे वो टेस्ट मैच ही क्यों ना हो, कोई भी फॉर्मेट क्यों ना हो, उसकी तो बात ही निराली होती है, अंदाज ही निराला होता है। जो पहले एशेज में पे नजर होती थी पूरी दुनिया की, अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में होती है। और इस बार देखिए बॉक्सिंग डे टेस्ट जो होगा वो भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा, जो ट्रेडिशनली भारत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ करता था। परंपरागत रूप से ऐसा ही देखने को मिलता था। तो और फिर जो ये 2023 और 25 की जो ये विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है, इसमें इस पूरी श्रृंखला का बहुत महत्व होगा, क्योंकि जो टीम यहां अच्छा करेगी वो टॉप पर पहुंचने की पूरी कोशिश करेगी। और बात अब आईपीएल की। सूर्य कुमार यादव इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के इस साल के संस्करण के शुरुआती मैचों में नहीं खेल पाएंगे। वे आज फिटनेस टेस्ट पास करने में असफल रहे और उन्हें बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी एनसीए से मंजूरी नहीं मिली। जानकारी के अनुसार गुरुवार को उनका एक और फिटनेस टेस्ट होगा। अगर वो पास हो जाते हैं तभी आईपीएल में खेल सकेंगे। आईपीएल की शुरुआत हुई नहीं और फिटनेस की समस्या फिर से शुरू हो गई है। बड़ी लंबी ये जो है अगर हम कहें श्रृंखला होती है, ये टूर्नामेंट बड़ा लंबा चलता है और खिलाड़ी फिट होते हैं, अनफिट होते हैं और शुरुआत उसकी हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए अगर आप पूरे आईपीएल 2024 पर नजर डालें तो आपको ऐसे ऐसे खिलाड़ी दिखाई देंगे जो कि फिटनेस को लेकर जूझ रहे हैं। मोहम्मद शमी हैं, मार्क वुड हैं, प्रसिद्ध कृष्णा हैं, और अब देख लीजिए कि जो स्काई हमारे स्टार वो भी नहीं खेल पा रहे हैं। तो एक कठिनाई तो होगी टीमों को, मगर इसी में नए उदीयमान सितारे भी उभर कर सामने आएंगे। नागालैंड के सोविमा में कल पूर्वोत्तर खेलों के तीसरे संस्करण की शुरुआत शानदार रंगारंग समारोह के साथ हुई। नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियो युयो ने इसकी आधिकारिक शुरुआत की घोषणा की। सुनते ही रिपोर्ट। More than 3,000 athletes from 8 northeastern states are competing in 15 disciplines on the ongoing Northeast Games 2024. The events are being held in 12 venues across 3 districts, Chumukidima, Dimapur and Kohima. Highlights of today's event include archery, athletics, badminton, basketball, boxing, football, lawn tennis, table tennis, taekwondo, volleyball and wushu. Host Nagaland started their campaign on high note with a victory over Tripura 1-0 in the opening football match in Chumukidima. In Sapatakro men's event, Manipur registered win over Mizoram. For Akashvani Aizawl from Kohima. चलते चलते कुछ और खबर। मणिपुर की टीम 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। पुणे में आज पूल जी के मैच में मणिपुर ने उत्तराखंड को 11-2 से हराकर अंतिम 8 में जगह। डुनेटन में पहले 2020 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड की महिला टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 27 रन से हरा दिया है और पंकज आडवाणी वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए हैं। घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। मलय जी स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों, आपसे फिर होगी मुलाकात। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार। क्या चिंता आपकी परीक्षा की तैयारी में बाधा बन रही है और आप परिणामों के बारे में चिंतित हैं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। क्या आपको नींद में परेशानी होती है? क्या आप बीच रात बार बार जगते हैं? टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें और हमारे प्रशिक्षित परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन पर रोक लगाने से इनकार किया। अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया। हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार कर 8 नए मंत्रियों को शामिल किया गया।
लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए अधिसूचना कल जारी होगी। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने तमिलनाडु में पीएमके के साथ गठबंधन किया। इसराइल के हवाई हमले में हमास के सेना उप कमांडर मारवान इस्सा की मौत और स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट बेसल में शुरू। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के कार्यान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने पिछले सप्ताह लागू हुए इस कानून को चुनौती देने वाली 237 याचिकाओं के जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, कांग्रेस के जयराम रमेश और तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा सहित कई लोगों ने इस मामले में याचिकाएं दायर की हैं। मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया। हिसार से कमल गुप्ता को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और 7 विधायकों को स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने चंडीगढ़ में मंत्रियों को शपथ दिलाई। बड़खल से सीमा त्रिखा, पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा, अंबाला शहर से असीम गोयल, नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव, थानेसर से सुभाष सुधा, भवानी खेड़ा से बिशंबर सिंह और सोहना से संजय सिंह को राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके साथ मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 13 हो गई है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना कल जारी की जाएगी। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की 102 सीटों के लिए चुनाव होगा। उम्मीदवार इस महीने की 27 तारीख तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं, जबकि मतदान 19 अप्रैल को होगा। लोकसभा चुनाव देश भर में 7 चरणों में कराए जाएंगे और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। पहले चरण में तमिलनाडु में 39, राजस्थान में 12, उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश में 6, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र में 5-5, बिहार में 4, पश्चिम बंगाल में 3 सीट सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान होगा। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने राज्य में आदर्श आचार संहिता को पूरी तरह से लागू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है, ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित किया जा सके। चंडीगढ़ में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बाहुबल और धनबल का दुरुपयोग रोकने के लिए व्यापक प्रयास किए गए हैं। एक रिपोर्ट। राज्य के 24,433 मतदान केंद्रों में से 2,416 की पहचान अब तक संवेदनशील के रूप में की गई है, जिसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की जरूरत है। सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी लगाने के साथ ही केंद्रीकृत निगरानी लागू की जाएगी। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से 18 मार्च तक राज्य भर में 24,433 दीवार लेखन, 15,653 पोस्टर, 7,511 बैनर और संपत्ति पर 23,916 लेखन हटाए गए हैं। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। इस बीच चुनाव आयोग ने एक शिकायत के आधार पर जालंधर के उपायुक्त विशेष सारंगल का तबादला करने का निर्देश दिया है। वहीं रोपड़ रेंज के एडीजीपी जसकरण सिंह और बॉर्डर रेंज के डीआईजी नरेंद्र भार्गव के भी तबादले का निर्देश दिया गया है। इन तीनों अधिकारियों को जिले से बाहर स्थानांतरित करने और एक ही संसदीय क्षेत्र में तैनात नहीं करने को भी कहा गया है। दिल्ली पुलिस ने लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया या एसएमएस से आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार की चुनौती से निपटने के लिए संयुक्त पुलिस आयुक्त बी शंकर जायसवाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। पुलिस ने कहा है कि एसएमएस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित आपत्तिजनक संदेश चुनाव कानूनों, आचार संहिता और आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करके चुनावी प्रक्रियाओं को बाधित कर सकते हैं। उधर केरल में सोशल मीडिया की निगरानी के लिए विशेष पुलिस बल गठित किया गया है। राज्य पुलिस प्रमुख डॉक्टर शेख दरवेश साहिब ने कहा है कि सोशल मीडिया पर आचार संहिता का उल्लंघन रोकने के लिए राज्य स्तर पर निगरानी दल गठित किए गए हैं।
लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग ने आवश्यक सेवाओं में कार्यरत अनुपस्थित मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए विशेष श्रेणी अधिसूचित की है। सूची में मेट्रो, रेलवे, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, बिजली और स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन सेवा, डाक सेवा, विमानन, आपदा प्रबंधन विभाग और मीडिया के कर्मचारी शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शरद पवार और अजित पवार गुट के बीच विवाद पर अंतरिम आदेश जारी किया। न्यायालय ने शरद पवार गुट को चुनाव में पार्टी के नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार का उपयोग करने की अनुमति दी। न्यायालय ने गुट को चुनाव के लिए पार्टी के प्रतीक चिन्ह तुरही बजाता आदमी का उपयोग करने की भी अनुमति दी। भाजपा ने तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव के लिए पट्टाली मक्कल काची पार्टी पीएमके के साथ गठबंधन किया है। पीएमके 10 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। पीएमके के संस्थापक एस रामदास, अध्यक्ष अंबुमणि रामदास और तमिलनाडु में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवारों के समर्थन में केरल के पालक्काड में एक रोड शो किया। इसके बाद श्री मोदी ने तमिलनाडु के सलेम में एक जनसभा में कहा कि पीएमके के साथ सीटों का समझौता होने के बाद एनडीए को नई ऊर्जा मिली है। तमिलनाडु के एनडीए के मिशन को एक और नई ऊर्जा मिली है। पीएमके ने भी एनडीए के नेतृत्व में तमिलनाडु का भाग्य बदलने की घोषणा की है। हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर अंबुमणि रामदास का टैलेंट, डॉक्टर रामदास जी का अनुभव, उनका परिश्रम तमिलनाडु के डेवलपमेंट को नई ऊंचाई देने में मदद करेगा। मैं एनडीए में शामिल होने पर उनका स्वागत करता हूं। अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन भी भाजपा में शामिल हो गई हैं। सीता सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी हैं। कांग्रेस कार्य समिति ने आज आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के घोषणा पत्र पर चर्चा की। समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कार्य समिति ने पार्टी अध्यक्ष को घोषणा पत्र को अंतिम स्वीकृति देने का अधिकार दिया है। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अब सबकी बारी है, करनी तैयारी है, आने वाली है बारिश, बस इतनी है गुजारिश। चलो वर्षा जल बचाए, भूजल का स्तर बढ़ाए, पानी सदा मिलता रहे, एक ऐसा कल बनाए, एक कैंपेन कैच द रेन। आप भी बारिश आने से पहले तालाबों, पोखरों और नालियों को साफ करें और वर्षा जल संचयन की व्यवस्था कर कैच द रेन कैंपेन का हिस्सा बने। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। ये आकाशवाणी है। नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के आज दूसरे दिन विभिन्न स्टार्टअप समूहों ने अपने अपने क्षेत्रों में किए गए नवाचार पर विचार साझा किए।
3 दिन के इस आयोजन का कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में उद्घाटन हुआ। इसमें विभिन्न स्टार्टअप के अलग अलग पवेलियन में कई प्रकार के नवीन तकनीकी और उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पूंजीपतियों और निवेशकों को भारतीय व्यापार के साथ जोड़ना है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत बी चौहान ने बताया कि महाकुंभ में स्टार्टअप को जोड़ने का काम किया जा रहा है। पूरे इंडिया से जो स्टार्टअप्स है वो लोग आके अपनी अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं और जेम इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहा है कि जेम में हमने अपना एक पवेलियन यहाँ रखा हुआ है जहाँ पे स्टार्टअप्स को जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं ई मार्केट प्लेस से। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज की तारीख में 23,000 स्टार्टअप ऑलरेडी जेम में रजिस्टर्ड है। चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह में 18.74% की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 22,27,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। वित्त वर्ष 2022-23 की इसी अवधि में प्रत्यक्ष कर संग्रह 18,75,000 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2023-24 में 3,36,808 करोड़ रुपए के रिफंड भी जारी किए गए हैं। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान जारी किए गए रिफंड की तुलना में 12.74% अधिक है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य शफीक को गिरफ्तार कर लिया है। केरल के मल्लपुरम के रहने वाले शफीक को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता श्रीनिवासन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। शफीक 16 अप्रैल 2022 को केरल में हुए इस हत्याकांड के बाद से छिपा हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। क्या गुस्सा आप पर हावी हो रहा है? टेलीमानस के 14416 पर कॉल कर गुस्से पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। हमास के उप सेना कमांडर मारवान इस्सा की इस्राएली हवाई हमले में मौत हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा है कि पिछले सप्ताह मध्य गजा में एक सुरंग पर हुए हमले में वह मारा गया था। उधर हमास ने इस्सा की मौत की कोई पुष्टि नहीं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुल्गारिया के अगवा समुद्री जहाज को समुद्री डकैतों से सफलतापूर्वक छुड़ाने के लिए नौसेना का आभार व्यक्त करने पर बुल्गारिया के राष्ट्रपति रुमेन राडेव की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने बुल्गारिया के राष्ट्रपति के संदेश के जवाब में कहा कि भारत नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षा करने और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती और आतंकवाद की घटनाओं से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट बेसल में शुरू हो गया है। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य सेन का सामना मलेशिया के लियोंग जून हाउ के साथ होगा। महिला सिंगल्स में PV सिंधु का सामना जर्मनी की यवोन ली से होगा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 736 अंक गिरकर 72,012 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 238 अंक नीचे 21,817 पर आ गया। पुणे और लखनऊ के कमांड अस्पताल को वर्ष 2022 के लिए सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के लिए रक्षा मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। इसमें पुणे अस्पताल को प्रथम और लखनऊ को दूसरा स्थान मिला है। ये पुरस्कार आज नई दिल्ली में प्रदान किए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन पर रोक लगाने से इनकार किया। अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया। हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार कर 8 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए अधिसूचना कल जारी होगी। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने तमिलनाडु में PMK के साथ गठबंधन किया। इस्राएल के हवाई हमले में हमास के सेना उप कमांडर मारवान इस्सा की मौत और स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट बेसल में शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Supreme Court refuses to stay implementation of the Citizenship Amendment Act, gives government 3 weeks' time to respond to petitions challenging the law. Haryana cabinet expanded with induction of 8 new ministers. Notification for the first phase of Lok Sabha elections for 102 seats in 17 states and 4 union territories to be issued tomorrow. BJP forms an alliance with PMK in Tamil Nadu for Lok Sabha polls. Hamas deputy military commander Marwa Isa killed in an Israeli airstrike. And in badminton, Swiss Open Super 300 tournament begins in Basel. The Supreme Court today refused to stay the implementation of the Citizenship Amendment Act, CAA. The Apex Court also gave the government 3 weeks to respond to 237 petitions challenging the law that was notified last week. The matter was heard by Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, Justices J.B. Partiwala and Manoj Mishra. The petitioners included the Indian Union Muslim League, opposition leaders Jairam Ramesh of the Congress and Mohua Moitra of the Trinamool Congress. The next hearing in the case has been set for April the 9th. Haryana Chief Minister Naib Singh Saini today expanded his cabinet by inducting 1 MLA as cabinet minister and 7 MLAs as ministers of state independent charge. With this, the number of ministers in the Haryana cabinet has become 13. Haryana Governor Bandaru Dattatreya administered the oath of office in secrecy to the new ministers at the Raj Bhavan in Chandigarh. Chief Minister Naib Singh Saini and former Chief Minister Manohar Lal were present at the swearing-in ceremony. Hisar MLA Kamal Gupta was administered the oath. As a cabinet minister, he was a minister in the previous government as well. The notification for the first phase of Lok Sabha elections will be issued tomorrow. In this phase, polling will be held in 102 Lok Sabha seats in 17 states and 4 union territories on the 19th of next month. Nominations can be filed till the 27th of this month. In this phase, polling will be held in Tamil Nadu, Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Assam, Maharashtra, Bihar, West Bengal, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Chhattisgarh, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Jammu and Kashmir, Lakshadweep and Puducherry. The Lok Sabha elections are scheduled to be conducted in 7 phases in the country. Counting will take place on the 4th of June. The BJP has formed an alliance with PMK, Patali Makkal Kachi party for Lok Sabha elections in Tamil Nadu. Under the agreement, PMK will contest in 10 constituencies. The agreement was signed by PMK founder S. Ramadas, PMK President Ambumani Ramadas and BJP State President K. Annamalai in Thailapuram. Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi today participated in a roadshow in Palakkad in Kerala as part of the NDA election campaign. This was Mr. Modi's first campaign event in Kerala after the announcement of general elections. BJP State President K. Surendran and NDA candidates from Palakkad and Ponnani Lok Sabha constituencies joined the Prime Minister. Mr. Modi also addressed a public meeting at Salem in Tamil Nadu. He said NDA has got new energy following the seat-sharing deal with PMK. तमिलनाडु के एनडीए के मिशन को एक और नई ऊर्जा मिली है। पीएमके ने भी एनडीए के नेतृत्व में तमिलनाडु का भाग्य बदलने की घोषणा की है। हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर अंबुमणि रामदास का टैलेंट, डॉक्टर रामदास जी का अनुभव, उनका परिश्रम तमिलनाडु के डेवलपमेंट को नई ऊंचाई देने में मदद करेगा। मैं एनडीए में शामिल होने पर उनका स्वागत करता हूं। The Congress Working Committee today discussed the party's manifesto for Lok Sabha polls. The committee held its meeting in New Delhi, which was attended by party President Mallikarjun Kharge, former President Sonia Gandhi and Rahul Gandhi, and other senior leaders including Priyanka Gandhi Vadra, P. Chidambaram, Digvijay Singh, Ajay Makhan and K.C. Venugopal. Briefing media after the meeting, Mr. Venugopal said the party's working committee authorized the Congress president to have a final approval for the manifesto.
Just days before the start of the Lok Sabha polls, former Indian ambassador to the US, Taranjit Singh Sandhu, has joined the Bharatiya Janata Party. Jharkhand Mukti Morcha MLA Sita Soren also joined the BJP in New Delhi today. 1989 batch IPS officer Sanjay Mukherjee will be the new DGP and IGP of West Bengal. He replaces IPS officer Vivek Sahai, who was appointed to the post yesterday after Rajiv Kumar was transferred from the post by the Election Commission. Punjab's Chief Electoral Officer Sibin C has expressed the commitment of his office to implement the Model Code of Conduct in letter and spirit in the state to ensure free, fair and transparent elections. Addressing a press conference at his office in Chandigarh today, he said elaborate efforts have been made to prevent the misuse of muscle and money power. A report. Out of 24,433 polling stations in the state, 2,416 have been identified as critical till now, warranting additional security measures. CCTV installation and centralized monitoring will be implemented across all polling stations. Efforts will also focus on increasing voter turnout, particularly at around 12,000 polling stations where voter turnout was lower than the national and state average in Lok Sabha elections 2019. Shishu Sharma Shantal, Akashvani News, Jalandhar. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our Twitter handle at AIR News Alerts. Lok Nirnay 2024 special program on general elections. Every evening at 7 and repeat broadcast at 9:30 p.m. on Akashvani Gold. Updates of election activities. Insights from regions and constituencies. Experts' opinion and analysis. In the world's largest festival of democracy, stay tuned for Lok Prasarak ke saath Lok Nirnay 2024. Welcome back. You're listening to the news at 9 on Akashvani. The Union Public Service Commission has decided to postpone the Civil Service Preliminary Examination 2024. The Civil Services Preliminary Examination, which also serves as a screening test for Indian Forest Service examination, will now be held on the 16th of June this year. The exam was earlier scheduled to be held on the 26th of May. The Commission has decided to postpone the schedule due to the ensuing general elections. Delhi's Rouse Avenue Court today extended the judicial custody of Aam Aadmi Party leader Manish Sisodia till the 6th of April in an alleged Delhi liquor policy scam. Earlier, the Delhi court had extended the judicial custody of Mr. Sisodia till the 22nd of this month. The National Investigation Agency, NIA, has arrested a key absconding member of the banned Popular Front of India, PFI, for the murder of RSS leader Srinivasan in Kerala. According to the NIA, Shafiq was absconding since the targeted killing of Srinivasan in Palakkad on the 16th of April 2022. He is a resident of Malappuram district and was part of the PFI machinery and hit squads that carried out the heinous killing of Srinivasan. The National Commission for Women, NCW, and Railway Protection Force have signed an MOU in New Delhi to prevent and combat human trafficking. Speaking on the occasion, Chairperson of NCW, Rekha Sharma, said the Railway Protection Force personnel deployed at railway stations are playing a crucial role in preventing crime against women and children. We have been working extensively to control women trafficking especially. We all know that in human trafficking 70% who are trafficked are women or girl child. For that, I think NCW's responsibility is very big in controlling the women trafficking. We have been doing these workshops with CISF from last 1 year now, all over India. I am thankful to DG that the Railway Police is doing such big job to control the crime against women and child. This MOU will play a big role in controlling this women trafficking. The startup Mahakumbh has registered record participation from leading investors, innovators and aspiring entrepreneurs. Over 2,000 startups and more than 1,000 investors are participating in this mega event. During the last 2 days, the event has witnessed vibrant discussions on the way forward and networking between all stakeholders. A report.
At the Startup Mahakumbh, 10 thematic pavilions have been set up at Pragati Maidan in New Delhi based on deep tech, artificial intelligence, fintech, agri-tech, biotech and pharma, gaming and incubators. The event is providing a unique platform for fostering connections between investors, entrepreneurs and industry professionals. A dedicated exhibition area showcasing innovative products and services developed by promising startups from across the country is a major attraction of the event. The event will culminate tomorrow. With Bhupendra Singh, Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi. Command Hospital of Pune and Lucknow have been awarded Raksha Mantri Trophy for the best and second best command hospitals of the Armed Forces Medical Services for the year 2022. The award was presented by Director General Armed Forces Medical Services and Senior Colonel Commandant Army Medical Corps Lieutenant General Daljit Singh in New Delhi today. The Raksha Mantri Trophy was instituted in 1989 to recognize excellence in healthcare services provided by armed forces hospitals of the AFMS and to foster a spirit of healthy competition among them. Hamas Deputy Military Commander Marwa Issa has been killed in an Israeli airstrike. U.S. National Security Advisor Jake Sullivan stated this. Israeli media sources also reported that Issa was killed in a strike on a tunnel complex under the Nusayrat refugee camp in central Gaza last week. However, the Palestinian group which controls Gaza has not officially commented on reports of his death. Issa is Hamas's most senior leader to die since the war began on the 7th of October. He had been linked directly to the decision to attack Israel in October last year and was considered one of Israel's most wanted men. In Haiti, at least 10 people were found dead yesterday in a wealthy suburb of capital Port-au-Prince as gang violence has taken a grip of the country amid political instability. Local media reported that armed gangs attacked homes, a bank and a gas station in the area. The Caribbean country has been seeing escalating violence for most of this month as armed gangs rebelled against Prime Minister Henry, forcing the country to declare a state of emergency. The 2024 edition of the Swiss Open Super 300 badminton tournament has begun in Basel. In men's singles, India's Lakshya Sen, Kidambi Shrikant, Priyanshu Rajawat and K. George will play their round of 32 matches tomorrow. In women's singles, fourth-seeded PV Sindhu is scheduled to face Germany's Yvonne Lee in the round of 32 tomorrow. Today, Sameer Verma and S.K. Karnakaran won their qualifying matches. In Nagaland, the third edition of Northeast Games are underway. The Games were opened with a glittering ceremony at the Regional Centre for Sporting Excellence, Ovima, last evening. Chief Minister Nephew Rio officially declared the Games open. More from our correspondent. More than 3,000 athletes from 8 northeastern states are competing in 15 disciplines on the ongoing Northeast Games 2024. The events are being held in 12 venues across 3 districts, Chumukidima, Dimapur and Kohima. Highlights of today's event include archery, athletics, badminton, basketball, boxing, football, lawn tennis, table tennis, taekwondo, volleyball and wushu. Host Nagaland started their campaign on high note with a victory over Tripura 1-0 in the opening football match in Chumukidima. In Sapatakro men's event, Manipur registered win over Mizoram. For Akashvani Aizawl from Kohima. Benchmark indices plunged over 1% today, dragged by index heavyweight stocks. A report from the business desk. The 30-share Sensex plunged 736 points, up 1.01% to close at 72,012, and NSE Nifty declined 238 points or 1.08% to settle at 21,817. In the foreign exchange market, the Indian rupee today ended at 83 rupees and 4 paise against the US dollar. Gold prices at the multi-commodity exchange for April contracts were trading at 65,490 rupees per 10 grams, and in intraday trade, Brent crude was trading at $87.03 per barrel when reports last came in. Arjun Chaudhary for Akashvani News. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court refuses to stay implementation of the Citizenship Amendment Act, gives government 3 weeks' time to respond to petitions challenging the law. Haryana Cabinet expanded with induction of 8 new ministers.
Notification for first phase of Lok Sabha elections for 102 seats in 17 states and 4 union territories to be issued tomorrow. BJP forms an alliance with PMK in Tamil Nadu for Lok Sabha polls. Hamas deputy military commander Marwa Isa killed in an Israeli airstrike. And in badminton, Swiss Open Super 300 tournament begins in Basel. That is all in the news at 9. Good night. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on advancement in agriculture value chain through Internet of Things and artificial intelligence. The participants are Deepak Parikh, agricultural economist, and Arjun Chaudhary, anchor. I'm joined by Sri Deepak Parikh, who is an agricultural economist and an entrepreneur. And today's topic of discussion is on the advancement in the agriculture value chain through the Internet of Things and artificial intelligence. And for the benefit of our listeners on Akashvani, could you tell us what the agriculture value chain is and what's the benefit of artificial intelligence and more importantly, the data management that comes with it? Yes, sure. See, when we start from all the way from the farm to the fork, everything which comes in between, managing of the food commodities in non-processed form, when you are buying from the farmers, then taking it to aggregator, the whole logistic involved into that, storage, warehousing of that, and from there moving it to a processor or moving it to those who would be milling it, and finally taking it to the restaurant or a food processing industry, and finally getting to your table in form of cooked food, agriculture commodities like dal and atta. All that, everything, all the steps involved in between is typically the part of the value chain of agriculture. Now, artificial intelligence and data science plays a very vital role because we all know that there is a substantial food loss which happens for post-harvest, typically from the farm to fork. One of the reasons is that actually logistic is not optimized. There is a challenge of right storage, ensuring that the warehouse is having all the environmental condition required to store the specific commodities. So because of that, a lot of wastages happen. So for typically non-perishable, it is between 12 to 18%, and perishable typically, like, when you talk about fruits and vegetables, it goes sometimes to as high as 30%. Now, this is where data science, artificial intelligence, Internet of Things plays a very vital role. First thing on the quality assaying. So we can use artificial intelligence-based computer vision to ascertain what is the quality of the commodity when it comes directly from the farmer. So at the mandi level or at the aggregation level, we are able to identify the quality of the agriculture commodity itself. And based on that, you can have a dynamic pricing and also understand that where and how it needs to be stored. So in case you see that the material is having suboptimal level of condition, then it has to be put in what type of storages. The next level is that actually the logistic itself. So whether the carrier which is taking your perishable, does it have right ambient temperature? Is it maintaining the moisture? All those things can be controlled using IoT devices, which you will find that in this refrigerated containers are. Then when it go to the storage itself, the storage, the inward, outward, and everything in between, like, when it was stored, how it was stored, whether temperature was maintained at the right level or not. All those things, again, that data can be utilized. While doing all those things, finally, when it comes to the end user, right, if you are using end-to-end traceability, you'll be able to have a QR code which will tell you when this produce was harvested, when it was stored, when it came to, like, a specific processing facility, and finally, when it ends up at your table, is it in the right condition or not? So that is where actually, the artificial intelligence and data science can first ensure that optimum logistics can lead to reduction in the losses of the food product. And I believe that its food item, it gets wasted in the transit. So this is one part where actually you save a lot of resources because the wastage is reduced. Second, it gives the comfort to the end user that the food which I am buying, it is safe or not. So I think these two very critical aspects of agriculture value chain which can be taken care of using artificial intelligence and data science to make it more efficient, economical, at the same time trustworthy. So you have spoken in detail about at least two issues, crop wastage and quality control of food materials. The World Economic Forum has also identified, citing the Sagu Bagu pilot project in Telangana, that there are other issues also, including market fluctuations and market access. How are these issues resolved through artificial intelligence, especially when we talk about market price fluctuations? Yes, so actually market prices are outcome of supply and demand and market sentiments.
And these two things, again, if we are having the right sort of data, typically historical time series data, we would be able to analyze and find out actually what would be the prospective or predictable prices going forward. So let's take example of pigeon pea or tur dal. Now, based on your historical data, you'll be able to find actually when the prices are typically high. So typically when the harvest happens, prices are a little bit low, and as we move towards month of June, July, August, the prices generally go up. Now that gives the opportunity for the farmer that in case with support of financial institution, or even if they have their own financial muscle, they can store the material and they can sell actually when the prices are high. And this is where artificial intelligence play a very vital role, because it's tool for predictive analytics, and hence you can predict the price. Second part is that it's just not the supply and demand data, but also sentiments. So artificial intelligence can listen to all the chatter which is happening relevant to the specific commodity in WhatsApp chats, on social media, as well as news sources. And based on that, it can come up with a sentiment, whether it is bearish or bullish. And if you add supply and demand and the sentiment, along with if some weightage is given to the policy making also, import and export policy and the storage policy, stock limit policy of the government, you'll be able to have a fairly good idea with, I'm saying, that variation of 8 to 10% about what it could be the forecasted price, or whether the prices would be at a specific level which would be profitable for the farmer or not. And based on that, they can actually decide when they want to liquidate their material, rather than liquidating at the time just after harvest when the prices are low. So this is where actually by forecasting prices in more efficient manner, you can help farmer to get better realization for their produce. So is it supply side economics we're talking about, or is it focused on demand? See, generally, if you see that in majority of the commodities, demand side are pretty stagnant, because generally, except when we are having some disruption like COVID, generally demand is not very inflexible, right? What happens is that suddenly you won't see that, for example, demand of tur dal in India is 4.2 million metric ton. It is not going to happen that actually overnight it is going to become 5 million metric ton. So those are typically inflexible. So there on the demand side, the challenge is not much. The challenge is in agriculture is on the supply side, because of bad weather, because of some of the origin from where we import our commodities. If something goes wrong there, or if there is a sudden change in the policy, whether at the origin or whether by the government of India, suddenly you find that the supply side economics change extensively. And this is where I believe AI can play a far better role than demand side, because for a country of 1.4 billion people, it is very difficult to exactly predict the demand. And with so many different interconnected markets, we are having so many states, some are deficit states, some are also that with surplus, and come out and ascertain the typical demand side. It's a challenge, and the demand, I'll say that fluctuation is also not that high as the supply side. What about market access? How is that issue resolved? See, market access can be resolved, because if you are having availability data, that which material is available where, and that data can be used, for example, by coming out with an auction platform where the buyers and the farmers, for example, we are having a beautiful government initiative called ENA, while it is not using extensively artificial intelligence, but at least the data science where a trader or a buyer can straight away place an order to more than 1700 odd mandis across India. So that creates a more transparent environment and provide better access to the farmer. Could you also talk about risks associated with farming in order to make it sustainable? How do you mitigate those risks? Climate change, pestilence and financial burden on farmers. We can start with climate change, because that's something that even the consumer feels in the day-to-day life. Now, see, climate change issues we are already facing, right? This year, if you see that, there has been challenging climatic condition in India, both during the Kharif and the Rabi season. Because of that, we are seeing that, the productivity of chickpeas, that is chana, has reduced substantially. Same has happened with pigeon pea. We are seeing that challenge also happening in maize. And last year we had challenges with the wheat. So you see that climate impact is already there, because now we are seeing that the monsoon is not as I'll say that smooth as it used to be. So past 3 years has been very challenging, and we can see that impact of climate change. We're also seeing that severe heat stress on the crops. Generally in the March, you find that in northern part of India, you were having a pretty decent cool environment. But nowadays, the temperature goes as high as 20 to 30 degrees, which is, I'm saying, that borderline case for a crop like wheat. And anything above that, it will reduce the yields of the wheat. So climate change is already happening now. Only way is that currently I won't say that the AI technology is capable enough to even have a better prediction of the weather. Because when we see weather in totality as in India, then we lose in the macro picture. The micro picture are very different. For example, if we are having 3 districts with excess deficit and 3 districts with excess,
then you say that there is a normal monsoon. But actually, 3 districts have been impacted badly because of drought, and 3 districts have been impacted by flood. So this is where I say that nuanced approach, where the micro level weather parameters need to be monitored. And based on that, new algorithms need to be developed so that we are able to predict the impact of climate change in a far better way than what we are doing today. So currently, we have not, I'll say that, mastered the technology. And going forward, I think AI would be equipped more with more and more data coming in to be able to predict weather in a better way. So let's talk about legacy risks, pestilence and financial burden on farmers, borrowing from local lenders. Pestilence, of course, means that you have the risk of pests and how it's supposed to be controlled using pesticides in order to mitigate this risk of disease. So how is that mitigated? See, this is the beauty where AI has played a very substantial role. It has mitigated risk for sure. Because based on the weather pattern and the historical data, you can predict actually what would be the chances of a specific type of pest infesting your crop, whether it is pink bollworm or stem borers, because you know that these type of pests, this is what the best suitable climate for them. So when you are able to get that information, you'll be able to predict that actually the chances of specific pest attacking, whether it is 30%, 40% or 50%, and based on that you can always take a preventive action. So this is where actually there has been a lot of I'll say the positive development, where just identification of the pest or predicting a pesticide has become very easy. With the click of a button and a photograph of a leaf, right, you are able to find out actually which pest has infested your crop, and then you can immediately take a remedial action by the farmer by application of pesticide or other I'll say that integrated pest management activities. So this is where I'll say that AI has been able to reduce to a certain extent the impact of pests for sure. In that, we are also seeing that development of new biological technologies that have also impacted substantially, because these biologicals, they are capable of handling some of the pests which have not been tackled well by conventional pesticide. Specifically, I'm talking about nematodes and all that. So definitely AI and biotechnology, they have to a certain extent given relief to the farmer when it comes to the pest infestation. Now coming to the financial burden, I would say that financial burden part of it is more of a policy and the farmer's own understanding of how the financials work, which is more important, because here you won't be able to find that AI being able to do a lot, except for definitely financial institutions. Sometimes what happens is that when they are using some of these AI technologies, specifically when they tie it up with remote sensing, they are able to ascertain risk about a specific farmer in a better way than they used to do it in past. But has that impacted farmer positively? I don't believe that has happened. Farmer are still dependent on credit from either the government systems or through the local lenders. And for both of them, AI or any digital technology has not been able to do much of impact. Let's talk about artificial intelligence for artificial innovation. And this is by the Center for the Fourth Industrial Revolution when we talk about sustainable farming. Tell us about this, which has caught the attention of the World Economic Forum this January. Yes, sure. So, luckily, I was the first person from India, and in fact, I believe, in Global South, who was awarded as a technology pioneer by the World Economic Forum for using artificial intelligence in agriculture way back, I think, in 2018. In fact, I was also the initial part of the people who were involved in conceptualizing the idea of AI for AI and how it can be implemented in India. See, we all understand that agriculture is a very critical sector, right? Going forward, even World Economic Forum understand that the food security and nutritional security is one of a big challenge and risk. And again, food is directly connected with the climate change itself, because agriculture is not just the victim, but is also a culprit of creating environmental damage. Because close to 28 to 30% of greenhouse gases is outcome of agricultural activity just after energy. Similarly, 70% of all the fresh water is being used in agriculture. So these are two critical risks. Even World Economic Forum understand that. And how to make this agriculture more efficient, so we start using less water, we are having little lesser negative impact on environment when we are doing agriculture or farming. That is caught the eye of just not World Economic Forum, but I think every organization, multilateral agency across the world, they are looking at it. In fact, very recently I was in Dubai for COP28. Even there, the first time agriculture was discussed extensively, because the world started believing that to address to the climate change issue,
we'll have to address the challenges of the agriculture first. And this is where I believe AI plays a very vital role, because with the right simulation models, as well as advancement of technology, whether it is about pest detection, whether it is about health of your crop, and the proper monitoring of how much resources, specifically water, is being used. And last but not least, actually the soil organic carbon content. All these factors can be very well monitored by remote sensing and drones or satellite at the same time with the sensors, and that data can be captured and again analyzed by AI and machine learning tools to give you a better perspective of what needs to be done and how it needs to be done. So I believe the whole of the world would be adopting agriculture technology, specifically AI and machine learning, remote sensing and IoT with more interest and with more investment. Well, thank you so much, Deepak Parekh ji, for talking to us extensively. Thank you. You were listening to a discussion on advancement in agriculture value chain through Internet of Things and artificial intelligence. The participants were Deepak Parekh, agricultural economist, and Arjun Chaudhary, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. Hei Akashvani Aizawl ani Zandar Kuala Chanve ania lunglen hun kan manganga tuntum lunglen huna chuan jelal thang lian zai kan ngai thlang min hlan lela ti hla sak ilongai thlangu.
kan ngai thla ta kha min hlan le la ti hla ani ole tuna chuan min then long ti hla I lo ngai thlang u Mangai na vang in lom thu ka shriche Katani ri nam vang in lom thu ka shriche Sak mel ton lo ni rain mel ma an ka sang ma se Ton le ni ngagin muang ten ileng zela Kangar mangai na moi ten lo fu sil se Un le ni him ten se ni mang du na Vang lai ni ten lo tlain sak mel po lo chuai ma se Katan chuani oh imoy luane Lim ten noi lên zela Mangai ai di reali Dora lên sel na an ka kan lao lo En marengi min tren Hian ka don dream chat hin lai ru ka hian Tra chung chuang nang ang hi ka lo pu reng em ni Ka fan mal som na ini Ka lei lom na par nhei chu Hitan ka thei na zong karon la ni Lai mangai na in bul kan chun to a Mangai na kum chu chu yin so tu na Lung kam reng om long e Mangai na sui khat fuanin Sui lung
กันไงทางตาข้ามินเทรนลงติดลาอันนี้โอเลจุดที่ส่งจูจานินลุงเลนหุนาเจเลลเทงเลียนใจกันไงทางที่จูเนี่ยอากาศวานีไอโซลจังปวนสูอันนี้ให้อากาศวานีไอโซลอันนี้จันจินทางหลังสารจวลอีลงไงทางวัดเชียร์ตัวเอชลรวยลวงอ่ะโลกสภาอินทันปุยในไม่ election commission ส่วน state ปารุก Home Secretary และ West Bengal Director General of Police อสอนทุดอนดานิน Home Secretary อันสอนเตฮีกุจรัตอุตรประเทศบิฮาร์จาร์คันด์ฮิมาชลประเทศและอุตราขณด์มีเตอันนี้ให้บากาฮิอันมิโซรัมและฮิมาชลประเทศตา General Administration Department Secretary เตอสอนบอกอันนี้บิรันมุมไบ Municipal Commissioner Iqbal Singh Chal ปบากาฮิอัน Additional Commissioner และ Deputy Commissioner เตปอันสอนบอกอันนี้National Testing Agency ชวนไม่นิสมปังอาเลนิสมทุ่มประคัดอินการ์ชูงิน CUET UGC exam บอสไอโดนะให้มิชูงเฮียนรำชูงลูกสบายอินทันปุยวอดหลักไม่นิสมนี่และนิสมนี่ปังอาลโดนะ UGC Chairperson M Jagdesh Kumar ชวนอินตุนทามาร์ชนิสมนี่ปรุกเล่ง exam ตัวเดตานดีลนัทเทลุไทยอันนี้โดนะ CUET UG exam ตุ้มเตและจิรไลท์จัดและอันนมนักมุนเชียดไทยอันนี้โดนะให้มี data และคันนี้เชียร์ชูงเฮียนิน CUET UG examนี่ตัวเมนิสมปังอาเลนิสมทุ่มประคัดชูงินในอันนี้อังอาตีรัฐสภา Chairman Jagdeep Dhankar ชวนเวนคานรัฐสภาเมมเบอร์ตานัทลันนนสันเจย์สิงห์จู Parliament House อารินอมนัทุติยมติรินอลาลูดadmit party ช่วยตัวสันเจย์สิงห์ฮิซุมเชเรลทุบวยหุ่นเองมดเชน Judicial Custody นะออกมาตุนให้รัฐสภาเมมเบอร์ตานัทลันนนเลอันนี้Maharashtra Naxal Help Pol Security Force te inkana Naxal Help Ali ka hlum anni thudon darin tukin khan Gadchirli district ta Rempanli ngochunga hian inkana thlenga helho dap chu be pui thlak mek helai muna hian Naxal Help Pol anom thu police ten an don chu bozui ngal ani tuti jong chu zanin ta na chanchin thar langsar zol kan ngai thlak thei chu ani Akashvani Aizawl ani du'zwal tunchum du'zwal pathian fakna hlathan huna chuan salem veng Aizawl chalai tinin hun kan mang ho dona tuna chuan an hlathan moi tak tak te ilongai tha ang u ole hei tuna hianin salem veng chalai tinen kan om hau me kani a tunchum du'zwal pathian fakna hlathan huna hian anni hianin lamoi tak tak te anron khang dona ni ahma sabera tan chon hei kabula hianin anula mel chade umai adinga ani hi aming te min han shil masa se kaming chu shalomi ania salem venga kan oma kalathan hi ka soi ngal me don Mizoram Senate Quarin Pulo mangai na tian an sakha kan thlanga han thlan chane mem pheichu kan ne lawa mai ro chu la hi thu cha a amoya han sanung boka chu ka thlan chan ni mai ro se chane maya khairon sei ngal tek maya Mizoram Senate Quarin te thlanga i khala khala ngai thadura du te nem han sak tur te han cái này em lâu mấy rồi chú lâu ngay thật tu giống giống để tan cái thằng sắc này rồi xe chắc khóc mấy nữa la ni tu ra ngay la nữa la shelo mit sunga kan lo me cái bọc lo me tu na chuan Mizoram Senate Choir te na an sak phul lo mangai na ti lai lo ngai thang o
Ole kan han than chun zo manga tuna chuanin tlangwal lam ve thung hianin han thlang sela change kabula hian tlangwal sang zai zoi mel chadeu mai adinga ani hian a mingte han sai masa se kalome ka ming chu lalfam ki mawar te ani a ti chuanin kimte ti te pon ming kau thina ti kha ming kau the mayang tlangwal kimte tlangwal kimte ani hianin ngai thatu te tan hlamoi tak aron than sak tura cheu ngai la englang e tun tum du zwal pathian fakna la than huna hian i du ber han thlang ta che kahlaron than tur hi lalpa chaklo ma ila swala ka min chandam ro ti vanal ro ti na sakha ani a tin ala thu hi kem kan tar langa nga helai hi atha e mema kan chaklo chung pon pathian ompuina hei kanwa du na ang ki a kha ani a khami kha ani a ti chuanin kan khan sak athe kan soi hal me don ka khan sak tu te chu mun sang tlang sanga tuna kan program lo ngai thatu te le KGP lama ka inman pui zong te tan karon thlanga chuanin angai thatu te na rilru le tharawa ma son an ne ngai theinan an tan kan ron thlanga tin hela hi lo om lo pal ani po in vanal rotina pathian hla sak shim khamin lo ta play sak khai chuanin kalong veo vanal rotika idu vanal roti chu idu ve shim ani mo ani kha ti ro kan shang wei te zinga chuanin zai thiam tak mai chuai theilo kan nei te hania lui om shin an wi om thar chin khop mai lek tlangwal kim te hun te min pe kan lo me ke po ka lo me dam lai tui puya katlara wa swal ri urle peo taki min ban rotia kona one mai long zol na hun
tuna chon hei tlangwal chelo deuh bula ka han thu ve thunga ani hi aming te min ha shil se kaming chu PC lal thang liana ania TL min ti chi tlangwal ni tlangwal ka tinga che tlangwal TL a mo ani chuanin ihla du zong tak mai tun chu ma hianin han thang de la tro Jonathan lian nain thleibi ka nei lo ti kha an thang karon thang thleibi ka nei lo ti hla khai khanga han du chane mo han khan chan te khai nei em nge a hla thu hi e ka du em wa ni pathian ni na mi sual le mi thate nun hlui thalo tak tak lo nei to te po lo ni sela yangai dam du thleibi ka nei lo ang khat na kin ina hela hian ka rel ru khoi thei le chu karon thlan chan ni e thlan chan po a chakhop mai ti chuanin lawai thatura du i nei te kha ka ringa sei don ni heti anga hela lo nal lo ti ve tu zong zong ka tan han karon thlan sak se lawai thavek tura ngai la nang po lawai thala tiro lawai thladon ne ale tlangwal ti ela kan lo me o ale lo me to mi sual ber po min mangai hi amak katilal pa eng tiang po in haiderila minen koli thullo kan lui wangin min mangai kiam lo ve min en kol dana min mangai zia alam mangai le không ai hiểu khi bị thân này lo về em ăn đi có lâu đi lo mà ngày thấy lâu in đây lâu khi em đi xuống để ta mỏi mình lần mai lên mình mà ngày em mangai tak lo kan hi van al fa pa meu thinan chuan ka te lua e mani nyang hal lo lo ran chen le cross ka ta van mi pui te pon an ui bet so lo che i mangai le không ai ga hian baby can lay the
thang tu in ni vanga mà mộ che ca ni lung cầm mangai gió vanga min mangai ni lung min mangai mai in ni na zong kan ni cầm mamo ber chu nang mangai an ni in mangai le không ai la ya thấy bi kan nei lo ve en ang ni ko lo ni la mangai thấy lo in nei lo ke ang mi swa ber ta mo in ni lam mai le min mangai em ni mangai le không ai ma ya thấy bi kan nei lo ve en ang ni ko lo ni la mangai thấy lo in nei lo ke ang mi swa ber ta mo in ni lam mai le min mangai em ni ke ang mi swa ber ta mo in ni lam mai le min mangai em ni hei tu na chuan in salem veng nula mel chan swan vor nula kim kimi bula ka chu ve thunga ani hianin ngai thatu zong zong te tan hlamoi tak aron thang tura ngai la kim hei tun chuma hianin I du zong tak mai pathian fakna la han thlang ta che zo rema la sak saltang trong trai na ti kha kan chang zo re ma zai I thanga zo re ma kha I du ve de shim ti na nge ni a he la han du san te na yem I ahla thu hi ka do lu tu ka I abi takin athunun lai te kha kan do zwai bi ka I min ne evem china chu wang chan kan thang ani ni etiro ala thu te kha acha aba ka zo re ma hi azai nung chin khop maya azai te hi angai no ma ti chuan lo ngai thatura du te kha inem zo re ma lo ngai sang tu zong zong te le he la thin lung ta ka lo feel ve chin te tan kan than sakang e ole la chatak mai thanga ti chuan in than sak te po khan lo ngai thabek tura ngai la ti ro kim kimi he chunga kan lo me te po ka lo me tanan trong trai na vui tâm ingai tha ka ti le ang vui khắc min phal sak chua in do na hi ma ni be ka tum chi ma se tel lo chuan ne ruan la lo ni lo zan in hiam ka cha cho lang ka wai zo ta ka tlo me lal pa ka kal ngam to lo mana khan in tui wai na I chan tir to kha tu na ching chi in lam ka lo hoi la pa wain hi tui a chang ti le turin min pui ro kam mangai te chu voi tam ka liam to a be don na ko tlanga ka shuai thling chi ka tan hua ma se mo eng chen nge he no hi nen ka lan si lo chua zang in hiang ka cha cho lang ka
Quay ni tuy chẳng tí lệ turin min bùi ro cả lấy xem hun na trăng hiền vuin và lắm cả đêm phố trì Una ngày đâm cả điên chê Thil mặc dù lăn tì rô Ô gia nín hiên cái chào Cho lăng cả quay dâu ta Cả lô mê lal ba cả call ngâm tô lô Mana kha nín tùy Hoài na ý chẳng tì Chinh chi in lam ka lâu hoi lal pa Wai ni tui chan ti le turin min pui ro Wai ni tui chan ti le turin min pui ro Ole hei tu na hianin salem veng chalai tenen kan om hau kan ti kha kan han than chun zom ze langa ka bulat langwal om hi kan han than tir le do na nga ama sa ini hing min chita che Coming to Moses pisiming than moya ni. Moses anti mai che mi Oh. Ani chuan hei I in veng hi anuam khop maya KGP lamati in mangem Theyang tok John in mangve. Ani chuan in tu chuma po hianin pathian fakna hla moi te han thang da che tro Jonathan lian na sak mangai tu ti la ka kalo thang. Mangai tu ti kha I khanga chuan kha la ka han tu than te in em An nei lo amoi ka tia ima. Amoi ti ve shim shim ni etiro chen thana hi hlan nal tak tak hi aron tho chwa pui china ti chuan longai kha dura du te Mun sang sang ka chien te le kan ve mi pui te longai thla ka tan. nang ma puni longai khang chu tro Moses ale I hun lu tak te min pe kan lo me Ki pok lo we. Tu nghe kan ni lal pa isia nghe ka ti chin I hai lo nun hlui liam to nu te vanga be dong chi sul nu po mu ta om lo ma ngai tu thin lung meu po liam chin ya hoi san ba Sual ke min ver pal ve min mangai min en ko chulo amal so min fur bang ve ke mai ya in mangai ka pu mo lo kadai pelten ka in sir na ber min ten tri heng hian ba ang min tring se rul zo mo he tak sai tham thim thu ber a po zalin fam chang ila ka sul nu ten a pu re Mangai tu mi sual ke min nar pal ve min mangai min en ko chulo amal so min fur bang ve ke mai ya I mangai ka pu mo lo
mai ka phu mol lo leituna hianin kapula hianin tlangwal felmel tak mai smart zai zoi mai ading ve thunga ani hi amingte hansoi sela change coming chu lalpe kluania pe ka ti pomin ko thiang peka ania ti chuanin peka hei tuntum kan ti ang hianin lai lo thang to chin re ngem hei tuntum hi ka voi khat na to ani chuanin lanal tak mai ngai khatu te tan tuntum du zwal pathian fakna la than huna hian han thang ta che bong kon pastor bia zai polin ti kha kan thang ve nge du chan deu te nem han nei em chong lo chu ting amoi a thu hi thabo ka mo chun mai an zai thiam boka zai thiam boka la rem hi amoi chin khop maya ole ti chuan lo ngai khatu ra han du deu bik riau te inem han du o har chu kan nei chong lawa zir lai pui te de ka chung khat lai han nai ten tan kran thanga ole a chakop mai an lo ngai thavek tu ra nga yang i hun te min pe a kan lo me po ka lo me
ole he lai hanin kan han kal thale de ole kanga tuna hanin kapula hanin tlangwa sel nel tak mai adinga ani po hiani amingte min han shil vesela change ka ming zo zo than kima ania kima ti tai ming ko ngai thatu te khanin kan no shat sak le takin a mel en reng han zo than kim ani om reng mel kha apua ti chuanin in tan hlamoi tak athlang tura ngai la tun chuma hianin englang in khanang le ni tin hian ti kha kalo thlang ni tin hian ti lai thanga ani le kha la kha han du deu chani nem tu chan em po kan nei chu lo ai mishing chu kan du thu sa mang vek hian engkim hi kal theilawa chunga po chuan ama hi so ni tin hian fakila chu ka du chan em ani a chakhop mai ka du chan te po chata kiron soi chuak thaya ti chuan lo ngai thatu ra du te ka chung te le ka chen te song song ania chuan nang ma po ni lo ngai thadon nia te reng mai ka lo ngai thange nge yang nang po ni lo ngai thaviang chu thange nge yang ole I hun hut takte min pe akan lo me okay po ka lo me ol he tun chum du zol pathian fakna than hun su kan lo du tok don nayanga tuna chuanin he helai salem beng chalai te hianin a chaber hi a to ber tan an kheke moti turani a kapula hianin tlangwal nel chateu mai adinga ani hian akming an sai phot sela change ming chu rin tlong ania chuan rin tlonga ti te man tlonga tlangwal tlonga tlangwal tlonga ani a ti chuanin I enge tun chum a hianin englange in khan ve ang marwati la cross kong ti ha thlang
cross kong marati hla I thanga chuanin kha hla kha amoi khop maya du chan te nem Sana em job lo amoi kati tu deu mai ole ni chuan kha khan chan han soi em tur nei lo ma la nang manu na athok lian hle ani arin om nga la moi ti a I thanga ani chuan longai thatura du te po I ne karinga I han soi don mi lo nga tha tu ro ka du tu zoram mi pui te tan ani mai akim zora mi pui te ti kha na hol kim deu ber maya ti chuanin tu na longai thatu te tan zong zong kha ni athan sak cheu ani ti kha shaula uluk takin in longai cheu do ne ot lang wal tlanga I hun hu tak te min pe akan lo me o Bole
Hei Akashvani Aizawl ani Zandar somle achanve ania March ni som pakua tholenia kan hun alo topta program pong to hler shwai tluang kania control room engineer duty larin chanamar kan program hidar somle chanve tang hian FM Gold Relay Delhi station atang alak chon ngai thlak chun som thei anianga naktu ka kan hun pa ngai kan program kan tren leang ngai thlatu te in zawai in mutui mang traffic ole